the moving parts into a single place. That is very critical and a very strong acknowledgement of what we're going to see in the future. Even India's crypto policy basically hinges a lot on that, going on and getting feedback from what's happening globally. And I think this is the right move. And I think we'll see the light of the day very, very soon in this. Yeah, as we will, there are a lot of optimistic, words which you have used in your statement, sir. But since we are talking about Ethereum and its road ahead, the merge is actually creating a big inquisitiveness in the minds of investors. So will it happen? And what is your strategy as far as Ethereum is concerned? And a second question, a follow-up on that is, what should investors do in such market as far as should they be focusing on staking or yield farming? What is your opinion, sir, if you can just club these two things? Sure. Well, Ethereum, Bitcoin, all these are large, big players have been there. They have a lot of critical projects happening on them. So one thing for sure, they're not going anywhere. Yes, there will be price volatility. There will have to be a price volatility. There always is. But my opinion, hold on. Yes, Ethereum is now forking and creating better suggestions and solutions to its platform, better inflections in them. That I think will be good for them. And to follow up on your question, what do we do with Bitcoin, Ethereum? We're holding them, prices are down. Well, staking and yield farming are currently the best options. Why? Quite like a bank fixed deposit, they will give you fixed returns. And I think that is an option to exercise while the market stabilizes, while the winter turns into summer, and then it goes beyond that. We got to have all our assets, let's leverage them better. And staking offers that, yield farming offers that. So why not get into that space? It's a great space to be. Your securities are safe with you. While you hold them, you earn the interest on them. Don't let them lie idle. Go ahead and do that. There are plenty of opportunities. Go ahead. I would suggest, please do that. So and don't really invest very high right now. Right, sir. So since you mentioned about a fixed return, there is one more crypto lender who has actually promised to give 18.6% per annum. That was Celsius. Yes, Celsius. Yeah, and we are talking about a broader bankruptcy talks. And there is Goldman Sachs who is coming, I don't know, it is coming for its rescue or for its own interest. Roughly around $2 billion is the size of asset which Goldman Sachs intends to buy of Celsius. So how can you explain this entire episode and the impact which Celsius has created on the entire market? Well, Celsius raised money, they raised expectations, but most important, by offering very high yield returns, they actually fueled the greed in every human being that we have. Every human being is greedy and wants more, and felt, wow, it's a great opportunity to earn lots of money. Frankly speaking, it's too good to be true. And that's exactly what has happened. When Bitcoin and Ether fell, everything fell. They locked the accounts. Celsius went for a toss. Blah, blah, everything. We all know Celsius was one of the catalysts for the fear cycle of this, fear psychosis in the winters, what we call the crypto winters. Now, Goldman Sachs is actually looking, overall, conceptually, Celsius, what they had was a great concept. The concept you cannot fault. Right, sir. Because it has fallen, Goldman Sachs is now looking at it as an opportunity, raising $2 billion, and mind you, is raising the $2 billion from its investors. Not on his own, that's the key thing, is from his investors who they feel, if they have the faith, which they will have, are going to make it big in this. Basically, the proposed deal is to buy Celsius assets at huge discounts right now in the event that Celsius files for a bankruptcy. So they are looking at the long term, they are looking at gauging interest. Basically, this is one of their strategies. And look at it from a different perspective. It's from their strategy. And they're soliciting commitments from Web3 crypto funds specializing in distressed assets and financial institutions, which have ample cash in hand. They're also basically gauging what are market sentiments for the future. They're not putting in money themselves, they're raising money. That's the big difference. Assets, cryptocurrencies right now, according to them, are being sold cheap, and they would like to get this leverage and manage their part in the fundraising at a lower cost now. So they've also, they already have, they're already talking to restructuring firms. Celsius is doing that. Well, Goldman Sachs, although has not really pushed the button completely, but they're all there. They're going to do it. So it's a question of time before they do it. And Celsius, while it has a great model, right now it is in great trouble as well. So great models always don't translate into great results. You've got to be a little careful, understand exactly why and how it happened, and
Just be a little careful. Don't let greed guide you. Let your common sense guide you. And you hope we all have that. Right, sir. So you gave a fantastic piece of advice that what is happening in the Celsius ecosystem. But since we are talking about Celsius, it has always, since the time it has gone under concern from the two tokens, as you mentioned, Terra Luna, the entire ecosystem collapsed, and then Celsius also, was on a downward spiral. So Celsius network threatens to become the industry's Lehman Brothers. Do you agree? First of all. Yes, and I agree. I agree. Anything which is too good to be true generally is too good. All right. And they're not using their funds to do anything. They're using investor funds to make money for themselves, just like a bank does more or less. But in this case, the greed factor playing a bigger role because more people are getting inside the system. And of course, crypto basically, in my opinion, has been always based on fast money, greed, etc. That's not a great strategy. Not for crypto, not for anything else. Okay. I think all of us need to recalibrate ourselves and say, well, listen, it's a great asset class for the future. It's money 4.0, but it is not a get-rich-quick scheme. That is what we should avoid. The pitfalls is what we should apply. Take away from the system. We should avoid them. So since we're talking about Celsius, Celsius was first to announce the freeze as far as the 1.7 million investors are concerned. Singapore-based hedge fund 3 Arrow has also defaulted on its payments. Yes. So this is actually creating a bigger mess for the entire Babel Finance, as we are talking about. And there is one more exchange, and there is one more, and one more. So what is the current situation? And one more interesting thing which I want to discuss with you, sir, is Bitfarm has actually sold his 3,000 Bitcoins. So actually this is not a statement which we can digest because there is no one to take their Bitcoin and lend. That is something which is happening in this industry. The liquidity situation has gone for a toss. What is your opinion on the current situation, sir? See, liquidity is taken a real beating, that's for sure. But again, if you circle back to my first comment, which I said, if somebody is selling, somebody is buying. Somebody has got the liquidity with them. There are people who are suffering. And of course, those people who have are going to be the ones who are going to take advantage of this. Now, multiple firms, all of them suffering, whether it is Coinbase, whether it is Gemini, even those, they have frozen hiring, etc. Even in India, you look very closer to home. Look at the exchanges like the CoinDCX, WazirX, they have also frozen a lot of their, recently we had statements saying that we're not hiring anymore and they're all realigning their business, etc. Liquidity is a problem globally now in this space. It grew too fast. In my opinion, it grew really way beyond it should have grown. It's blockchain, which is the big phenomena. It's not necessarily crypto, but the fact is that everybody understood crypto before they understood blockchain. And that brings us to the question, why don't you guys understand blockchain? If you do that, you will understand the vagaries of crypto and then make decisions accordingly. All these companies which you mentioned right now, right from the Coinbase to Gemini to all the others to Celsius, etc., all of them, if you look at it, did not have the blockchain background. They had a crypto understanding and they took advantage of the vagaries of an unregulated space and were first movers in that. And therefore, their success went up, but also their failure. So as they say, what goes up must come down. And that's exactly what we are seeing right now. One last question before we step into our rapid fire question and answer session, sir. So what is your opinion as far as the investors are concerned? So some are sitting on cash, some are sitting on huge losses. So what is your advice to them, sir? Yes. Those sitting on cash, hold and pick up small lots in regular, good, steady, stable coins. Okay, if you can just mention few, sir. Well, I would say Bitcoin is still a good buy, even though it's low. Yes, it's pretty low right now. It's a good time to keep accumulating. Even if it goes down to 18, 16, you can still keep buying it because there is an intrinsic value which people perceive. It doesn't have personally any asset backed anything. So pick up that. Pick up coins which have got some good value in the future. Look at Solana as one of them, Ripple as some of them. These are good to look into the future. If you're looking at quick money, don't look at any of these. Don't look at anything. Put your money on a horse and hope for the best. But if you're looking at long-term investments, these are the coins which are going to have some value. So I would say still look at Bitcoin, have a look at Ethereum, have a look at Solana, have a look at Avalanche, have a look at Algorand. They are moving pretty fast in the right direction. Plus, they've got projects on them to back them. So they are not speculative coins. They are more tokens and coins which have certain intrinsic value. Look at those. Of course, this is based on their moving averages, their technicals, etc.
Crypto winters can be very long, so don't expect overnight success in this, that's for sure. But look at these 4-5 stable, steady coins. Well, I will not say stable coins, but steady coins. And these are the coins which are going to have intrinsic value going forward. There are many more, but these are the ones which we all know in India. So go ahead and look at these, keep tracking them, and keep putting small amounts aside month on month, week on week, depending on the movements, and keep putting in money in that. That's where you're going to make some money in the future. Fantastic. That's a fantastic piece of advice coming in from Mr. Raj Kapoor. Sir, we enter our last segment, the rapid fire question, where I will ask you some quick questions and you have to answer it in very short and very precise manner and very quickly, sir. So first question is, will Bitcoin bounce back to its level above 30,000, sir, and by when? Okay, my answer is yes, it'll bounce back. By when is a very difficult guesstimate, but I would say within a year and a half, you'll find it beyond that point. That's for sure. Why? Short term, no returns. All right. So my second question to you is, after the merge is complete, so layer 2 solutions, will they still survive? There is always a place for layer 2 solutions. So survival is not the question. How they evolve and innovate for the future, that is going to be the question. Survival is not going to be the question. They will survive. So when can we see the entire global cryptocurrency market touching $3 trillion again, sir? Well, in my opinion, it'll still take a year and a half. We are going through a very terrible winter, lots of things. By the time, there'll be a lot of clarity. As regulations come in place, we will see the movement going upward. It'll be in sync with regulations. Fantastic. The market will be in sync with regulation, and the regulation is the way forward. That's the word coming in from Mr. Raj Kapoor. Thank you so much, sir, for being a part of this special interaction on Crypto TV, and thank you so much for educating our viewers. It was a pleasure having you on Crypto TV, sir. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure being here, Manoj. Thank you so much. Bye-bye. That's all there is in today's Crypto Masters. So cryptocurrency markets are highly volatile. The views of the guest are purely his and doesn't represent of that of Crypto TV. So consult your financial advisor always before making any investment bet. Until then, keep watching Crypto TV. Thank you. तेरा वर्षांची नायला हेस हिने तिच्या डिजिटल कलेच्या जोरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. किशोर वयात पहिल्या टप्प्यावर पाऊल ठेवल्यानंतर या मुलीने टीनेजर NFT मिलेनियरचा किताबही पटकावलाय. मित्रांनो, कदाचित तुम्ही हिला नायला नावाने ओळखत नसाल, परंतु या लॉंग नेकीसला तर तुम्ही चांगल्याच प्रकारे ओळखत असाल, बरोबर ना? वेल, हेच तर आहे नायलाचे सुपरहिट क्रिएशन. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is Axie Infinity Stars, known as AXS. If you are a pet lover and a gamer, I'm assuming you probably have heard of this already. If not, allow me to enlighten you, because this game pays you to be in love. The highlight is it has gone up 11,000% last year. Playing this game is collecting, breeding, raising, battling, trading token-based animals known as Axies. These Axies are NFTs and their crypto token is AXS. So you can play the game and get paid for it. Money, 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 money. The more you play, the more money you make. And this money then can be staked. You can make more by voting for it. These are NFTs and tradable. And every time you go out and you vote for it, it's actually governance token, which means you decide how the game develops further. The game is already in Web 3.0, which is in the metaverse. Are you ready for the metaverse? But if you see the game, it isn't as advanced as you want it to be for the Web 3.0. But the real question is, are people playing this only for making money, or would the real purpose of the game stay and attract the right audience to keep paying you what you do love? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal.
time is changing, we will too. ट्रेड वही होगा, ट्रेंड हम बदलेंगे और साथ ही बदलेगा फ्लेवर भी। सिर्फ क्रिप्टो की बातें होगी with lots of fun. So be ready for the new experience with us. जैसे गोल्ड के बाद सिल्वर की चमक और खनक सबसे फेमस है, वैसे ही क्रिप्टो के वर्ल्ड में डिजिटल बिटकॉइन के बाद डिजिटल सिल्वर यानी कि इथीरियम सबसे फेमस है। आज मैं आपको तनिक तनिक करके इथीरियम का एक ऐसा टॉनिक दूंगी कि अगर आपको कोई नींद में भी उठा करके पूछेगा ना कि भाई इथीरियम क्या है, तो आपको उसकी पूरी कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होगी। हे गाइस, मेरा नाम है यशी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और आज के इस एपिसोड में हम फन वे में जानेंगे कि आखिर इथीरियम क्या है, इथीरियम की डिजिटल इमली आखिर खट्टी है या मीठी, और थोड़े से समय में ही इथीरियम का पौधा पेड़ कैसे बन गया, जानना है, राइट? अच्छा, 1991 की फेमस मूवी सौदागर में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स थे दिलीप कुमार साहब और राजकुमार, और वो थे जंगल के दो शेर, राइट? वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में भी दो शेरों का राज चलता है। बिटकॉइन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, आज हम इथीरियम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इथीरियम आखिर है क्या? इथीरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जिसे ईथर या फिर इथीरियम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन मिस यूनिवर्स है तो इथीरियम मिस वर्ल्ड है, यानी कि दोनों चीजें अपनी जगह जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या आप जानते हैं 2015 में लॉन्च होने से लेकर अब तक इथीरियम की प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 36,000% का उछाल आया है। अगर स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो 20 से 30% बढ़ जाता है तो हमारे पांव जमीन पर रहते ही नहीं है, राइट? एंड नाउ जस्ट इमेजिन 36,000% का रिटर्न कितना होता है बॉस। यार मैं जरा काउंट करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग घूमा, मन में लड्डू फूटा। अब आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कि इथीरियम में जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। रुको जरा, वेट करो, पहले इथीरियम को पूरी तरह समझ तो लो। इथीरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी समझने की भूल ना करना लल्ला। इथीरियम तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का एक ग्लोबल ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राइट? सो बेसिकली इथीरियम इज वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव यॉर्क रोल्स ने ये तक कहा है कि 2023 तक इथीरियम नेटवर्क डिसेंट्रलाइज एप्स का हब बनने वाला है। वो कौन सा डायलॉग था सिंघम का, जिसमें कहते हैं अजय देवगन, जिसमें है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम। अभी सही बोला ना? खैर, मूविंग ऑन टू इथीरियम प्लेटफॉर्म में भी बहुत दम है बॉस। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की डिजिटल लेजर नहीं है। इथीरियम का विजन है एक न्यू इंटरनेट स्पेस को क्रिएट करना, जहां किसी भी टेक जायंट कंपनी या गवर्नमेंट की एजेंसीज बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एक ऐसा इंटरनेट जहां आपका प्राइवेट डेटा, इधर आओ, 100% प्राइवेट रहेगा और ये डेटा किसी भी मोनोपोली में भी शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, इथीरियम पर गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ब्राउजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी क्रिएट किए जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी एप्स भी कहेंगे। इथीरियम यूजर्स डी ऐप यूज करने के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। इस फीस को क्रिप्टो वर्ल्ड में गैस भी कहा जाता है। 1 सेकेंड, गैस कहा जाता है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के 93% डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस इथीरियम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं? कितने सारे फन फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको। हाँ, वैसे शॉर्ट टाइम में इथीरियम के फेमस होने का मेन रीजन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी बला का नाम है? वेल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बिना थर्ड पार्टी के सिर्फ कंप्यूटर कोड से होने वाले दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। वो क्या कहते थे?
अरे मियाँ बीबी है राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, मूविंग ऑन टू इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी की वजह से फ्रॉड का तनिक भी चांस नहीं है, इतू सा भी चांस नहीं है। वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट सेफ भी हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का खर्चा जो बच गया है। तो अब जलेबी से लेकर के जेट इंजन तक की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये सब कुछ सेफली आप कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। मूविंग ऑन टू एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इथेरियम के क्रिएटर वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनेयर हैं? अभी वो सिर्फ 27 इयर्स के हैं, हाँ, और उनका नाम है वितालिक बुत्रिन। मैं जॉब छोड़ के जा रही। वितालिक बुत्रिन रशिया में पैदा हुए हैं और कनाडा में बड़े हुए हैं। वैसे उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जिसको सुनते ही आपको उनको प्यार से सल्यूट करने का मन जरूर करेगा। 2021 में मिस्टर वितालिक बुत्रिन ने इंडियन क्रिप्टो कोविड रिलीफ में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों रुपए डोनेट किए थे। एंड टू बी प्रिसाइज, $1.14 बिलियन। मिस्टर वितालिक बुत्रिन इंडिया की ओर से थैंक यू वेरी वेरी मच। जैसे सुपरस्टार आर वेरी ओन थलाइवा रजनीकांत साहब ने रोबोट के बाद अक्षय कुमार के साथ में रोबोट 2.0 फिल्म बनाई थी, वैसे ही इथेरियम 2.0 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इथेरियम 2.0 का दूसरा नाम है सेरेनिटी। किसी भी ब्लॉकचेन को 3 फैक्टर्स पर इवैल्यूएट किया जाता है। अभी बताती हूँ आपको किस किस पर। स्केलिंग, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग यानी कि पर सेकंड में कितने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी मींस कि ये प्लेटफॉर्म कितना हैकिंग और फ्रॉड प्रूफ है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इस प्लेटफॉर्म को कोई एक कंपनी, गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल नहीं ओन करता है। इथेरियम में करंटली स्केलिंग का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। एक बार फिर से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है, यानी वीजा की स्केलिंग हुई 1700 TPS, whereas इथेरियम करंटली सिर्फ 15 TPS यानी कि 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ही हैंडल करती है। आई नो द नंबर इज क्वाइट लो, पर फिकर नॉट, 2022 में जो इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है वो पर सेकंड 15,000 ट्रांजैक्शंस हैंडल करेगा। ओह माय गॉड, यानी कि कहां 15 TPS और कहां 15,000 TPS। मतलब इथेरियम 2.0 स्केलिंग में सबको धो डालेगा। इट मींस 2022 में इथेरियम प्लेटफॉर्म तो फुल स्पीड से भागने वाला है और क्रिप्टो वर्ल्ड में तूफान लेकर आने वाला है। ऐसे ही फन फैक्ट्स और जानने हैं, राइट? डू नॉट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी यशस्वी साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal.
Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma and today we are going to talk about consensus algorithm. Consensus is key to the decentralized participation in the distributed leisure environment. The participants should arrive at a consensus about what is good and should be included and what is bad should be excluded. It is important for the entire community to function in an orderly fashion and realize the purpose of the collaboration. Without consensus, there will be chaos. Chaos would be detrimental to the sustainability of the system. In the blockchain ecosystem, a consensus algorithm is a defined programmed procedure. It is a set of rules which defines how the peer participants of the peer-to-peer network conduct themselves in the environment. These rules will help the participant decide on which of the transactions are to be accepted to be included in the immutable digital ledger and which ones are not to be. Why is a consensus algorithm needed? The peers in the network will never know each other. The problem, therefore, is how to establish trust among the participants without disclosing their identities. In order to achieve that, the activities allowed to one needs to be restricted and strictly defined. So once you know that the other participant can't really misbehave, you can participate in the network with trust and together can achieve reliability. This will help a larger participation and will in turn lend security to the entire process. The consensus algorithm has 5 objectives in the DLT environment. First of those objectives is that it wants to achieve unified agreement among participants. In centralized systems, trusting the central authority is mandatory. Here, the participants need to trust the system, and they need to do this without having to establish trust among each other. Only then this environment can achieve unified agreement. Secondly, the network participants should be motivated to achieve common alignment of all their economic incentives. This is a must to develop a self-regulating system which can be entrusted. Thirdly, the system should not allow anyone to cheat. It must prevent double spending. Fourthly, the system is supposed to be fault tolerant. So much so that if a section of the network fails to perform at any point of time, the rest of the network should be able to continue business seamlessly and keep providing consistent and reliable results. Last but not the least, the consensus algorithm must be designed in a way that ensures equality among all participants so that no one can take any unfair advantage from the system. Safety first. The algorithm are capable of generating valid results and does not entertain false attempts. It should be participatory, without any discrimination towards any participant, and should allow and incentivize participation. Egalitarian. It must treat every participant as an equal member of the whole community. A faulty consensus algorithm will split the decision of the community and may even result in the duplication of the records, creating conflicting transaction history and failing to perform as a single source of truth. This results from failure of the community to arrive at a consensus. Subsequently, this will make some nodes or participants confused about the right course of action and result in malfunction. A section of the community could get conflicted and will increase the latency in internodal communication, dispute resolution, increasing the application latency and reducing the network efficiency. In other terms, it will make the objectives of the blockchain project fail. Consensus algorithms are commonly termed as proof of something. The most popular one is the first one used by Bitcoin blockchain, proof of work. Others are proof of stake, proof of authority, proof of history, proof of activity, proof of identity, proof of burn, proof of elapsed time, proof of importance, and many such. Some are also known differently as delegated proof of stake, least proof of stake. Some have uncommon names like Byzantine fault tolerance, direct acrylic graph, Tendermint, Ouroboros, and some even call themselves Grandpa.
Grandpa may sound funny, but it's actually an acronym for ghost-based recursive ancestor deriving prefix agreement. Thank you. We will keep coming back with more interesting stories. I'm Ruchi Sharma. Have a great day. लोग टोर्नेडो कैश मिक्सर्स का उपयोग क्यों करते हैं? आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विशाल सारस्वत। मेन इसका उद्देश्य है कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं कोई आपको ट्रैक ना कर सके। ये मेरी प्राइवेसी है, मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इसलिए प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए कॉइन मिक्सचर्स टाइप के जो सिस्टम्स हैं वो आए और टोर्नेडो कैश भी उनमें से एक है। अरे मनोज, ये हटाओ ना न्यूज़पेपर। अरे क्यों? मेरी बात सुनो, यू विल बी सो इम्प्रेस्ड एंड सो प्राउड ऑफ मी। चलो बताओ आपकी क्या बात है। मैंने कहा था ना कि मैं पूरी रिसर्च करके आऊंगी क्रिप्टो करेंसी पे। दैट्स ग्रेट। बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है और मैंने ये देख लिया है कि जैसे बिटकॉइन इतना ऊपर चढ़ रहा है, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगी। बिटकॉइन? लेकिन मनोज, छोटी सी एक बात, एक प्रॉब्लम है जो मुझे तंग कर रही है। बताइए। 50 लाख के आसपास रहती है इसकी वैल्यू। इसे खरीदने के लिए तो मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़ेगी। हम बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो एस्पेक्ट है वो वी विल ट्राई टू डिस्कस द फंडामेंटल वैल्यू अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी, ना ही कि हम गिव एनी रिकमेंडेशन अबाउट इट। ठीक है, आपने जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा तो यू आर अंडर अ ब्रॉडर कंसर्न की 50 लाख की एक कॉइन है, तो आपको आपकी जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है। पक्का ना? यू आर नॉट सपोज टू सेल योर फ्लैट या फिर जो भी है। बिटकॉइन आप 0.0000001 which is known as a सातोशी के वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। इतनी छोटी वैल्यू पर? इनके जो फाउंडर है सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन किया। मिस्ट्री मैन, देखो मैंने किया ना अपनी जो कि हम भी उनको भी ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। तो मिस्ट्री मैन तो है ही वो। और इनफैक्ट लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया था कि जहां पर बिटकॉइन को एक अच्छे वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एज लो एज 100 रुपीज। व्हाट आर यू सेइंग? एक सेकंड। हाँ, 500 का बिटकॉइन तो मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल, आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर दिस थिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। 2010 मई 22 को एक बंदे का नाम जिसे लेस्ले हेंस है, उन्होंने पापा जॉन्स के 2 पिज्जा खरीदे। आपको मालूम है कितने में? कितने में? 10,000 बिटकॉइंस में। व्हाट? 10,000 बिटकॉइंस मतलब 10,000 इंटू 50 लाख, मतलब मैं तो इतने जीरोस भी नहीं गिन सकती। जीरो की गिनती में नहीं चलते। और वो उस इंसान को तो शॉक लग गया होगा बाद में। आई थिंक इससे ज्यादा स्मार्ट तो वो थे, क्रिस्टोफर कॉच। 2009 में उन्होंने द एक्सीडेंटल मिलेनियर, या द एक्सीडेंटल मिलेनियर, $26 इन्वेस्ट किए 2009 में। उसके बाद भूल गए वो, और 4 साल बाद 5,000 बिटकॉइंस की वैल्यू हो गई थी लगभग $1 मिलियन, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1,000 बेचे, एक अपार्टमेंट खरीदा, और आज भी उनके पास 4,000 बिटकॉइन है। मुझे अगर जहां तक मुझे याद है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको रोका था। और अच्छा, वो पहली बार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी थी। हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं होता है गर्लफ्रेंड की बात सुनना। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करके देयर आर मेनी पीपल हु हैड मेड वैल्यू बिटकॉइन से लेकर। जैसे हमने एल सैल्वाडोर एक कंट्री का अपने नाम सुना है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। एल सैल्वाडोर हैज एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। सो देयर आर मेनी फ्यू करेंसीज जिसको एक दर्जा मिला है, क्योंकि बिटकॉइन इज द नंबर 1 करेंसी इन द प्लैनेट। आपने देखा, इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी में लगभग 1300 से के करीब बिटकॉइंस भी ऑफिशियली वो होल्ड करते हैं। वाओ। मैं सोच रही हूँ ऑन द सेकंड थॉट, क्यों ना मैं भी किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करूँ जिसके जो प्राइसेस बिल्कुल चांद तक जाए। मून कॉइन में इन्वेस्ट करूँ क्या? मैडम, देयर आर मेनी करेंसीज दैट विल ऑफर यू टू टेक यू टू द मून, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि आप उतरोगे कैसे? मून से जमीन पे उतरते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट आवर अदर करेंसी दैट इज नोन एज ETH, आल्सो नोन एज इथेरियम। तो वो तो ब्लॉकचेन है ना? बिल्कुल, या करेंसी है। हम तो करेंसी की बात कर रहे हैं। This is how we step in. We are here to explain the fundamentals of cryptocurrencies. So Ethereum एक प्लेटफॉर्म है, और उसका जो कॉइन जो वैल्यू है that is known as ETH. If you are getting confused, very basic fundamental principle that a coin derives value from its platform. जो भी economic activity a platform does or it considers, उसका impact जो है ना ETH पे आता है। That means उसकी जो cryptocurrency है उस पर आता है।
एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थ्योरम के बारे में बता दूं। विटालिक बुटेरिन 13 साल के थे, जो इसके फाउंडर हैं। विटालिक बुटेरिन 13 साल में तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। आई थिंक सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम। मैं तो 13 साल में मतलब हार्डली मैथ्स कर पाती थी, टीचर की डांट खाती थी। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। विटालिक बुटेरिन ने उसकी शुरुआत की थी। इनफैक्ट 2 साल के बाद 2015 में उन्होंने इथेरियम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। एंड सी दिस, आफ्टर 7 to 8 years देयर आर मेनी कंपनीज, बिग कंपनीज, ह्यूज कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, HSBC उसके साथ में सपोर्टेड है और वहां पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इथेरियम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बचपन में ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना डेंटा कॉइन, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया, डेंटा कॉइन में को कंसीडर करूं क्या? आप डॉक्टर हैं? नहीं हूं नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर्स वाली है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप ये कॉइन खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज डेंटल और डेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब मेरी एंट्री बैन है उधर। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। आप व्हाइट बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे बढ़े। नो बेल्ट। आपने एक गाना तो सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली। जूही चावला तो बहुत बड़े फैन भी रह चुके हैं उसके। वो ऐसे ही ये बिनांस की कहानी है। वो गए चाइना से उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, चाइना से गए जापान से गए यूएस। ओके वाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इनफैक्ट 2017 में बाइनेंस की जो शुरुआत है वो चाइना में हुई थी और वहां से लेकर चाइना, एज यू आर अवेयर दैट कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स में था और उसको रेगुलेट करने की शुरुआत वो साल से हुई थी। बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर कंसर्न दे मूव टू जापान और वहां से लेके ही वाज ड्विंडलिंग बिटवीन जापान, हांगकांग की तरफ भी उनका रुख था। मीनवाइल यूएस ने उनको बैन कर दिया था। और आपको बता दूं, कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपना नाम बाइनेंस यूएस कर दिया और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और मैं आपको एक और बात बता दूं, उनका जो करेंसी है दैट इज नोन एज BNB। नाम तो याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इजी है। मुझे अमेरिका बहुत पसंद है और अमेरिका से मुझे याद आया बर्गर्स। यू नो आई एम अ फूडी, तो कुछ बर्गर, गार्लिक ब्रेड, मैंने सुना वूपर कॉइन है, गार्लिक कॉइन है, इनमें इन्वेस्ट करूं, कंसीडर करूं? फिर से मेरा आइडिया खारिज मत कर देना प्लीज। बिल्कुल, एक काम करते हैं, आपके लिए गार्लिक ब्रेड मंगा लेते हैं। दैट इज द ओनली वैल्यू इट कैन डिराइव फॉर यू इफ यू ऑर्डर गार्लिक ब्रेड और यू ऑप्ट फॉर सम स्टूपिड कॉइन्स। तो आप उस पे फोकस मत कीजिए, लेट्स फोकस मोर ऑन स्टेबल कॉइन। मैं आपको बता दूं कि उसका फंडामेंटल वैल्यू कहां से डिराइव करता है। सो विल टॉक अबाउट टीथर। तो टीथर इज अ क्रिप्टो करेंसी जहां पर इट्स अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? मतलब बाकी कॉइन्स क्या बैलेंस में नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही आप समझो। टीथर डिराइव्स वैल्यू, इट इज एसोसिएटेड विद USDC। तो उसका मतलब ये है कि अगर समझो से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन और बिटकॉइन की वैल्यू 67,000 पे पहुंच गई है, आपकी रिसर्च के अनुसार आपको ऐसा लगता है कि वो बिटकॉइन की प्राइसेस कम होने वाली है, यू विल बुक प्रॉफिट्स इन बिटकॉइन एंड यू विल पार्क योर मनी इन टीथर। सो टीथर क्या करता है कि बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्टेबल, आई मीन सिंस इट्स अ स्टेबल करेंसी, तो उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है क्योंकि यूएस की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है और वहां पर उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है। सो योर इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड, तो इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। दिस इज व्हाई उसका नाम ही है स्टेबल कॉइन। पर अमेरिका से ना मुझे UFO भी याद आते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या मैं UFO कॉइन में इन्वेस्ट करूं? क्या पता एलियंस खुद मेरे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आए। लेट्स नॉट गेट इनटू द जादू एक्टिविटी एंड वी विल फोकस मोर ऑन। मेरे सारे कॉइन्स आपने रिजेक्ट कर दिए। नहीं, कॉइन रिजेक्ट करने ही है क्योंकि एकदम आपकी जो रिसर्च है वो एकदम बेकार है। मैंने रिसर्च तो अच्छी की थी। हाँ, रिसर्च अच्छी करी है आपने। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ओनली एंड ओनली to make our viewers understand the basics and the fundamental principle behind cryptocurrencies, because cryptocurrency investments are highly volatile and it's a very volatile sector. You should be in a very sound position and you should always do your research before investing in cryptocurrencies. So Ruchi, आपका डिसीजन खुद लीजिए. You consult your financial advisor before doing any investments. So and let's focus on other aspects, what all aspects and fundamental coins are there that can be explored with us.
क्रिप्टो की मेल डोमिनेटेड दुनिया में वुमनिया भी अपनी जगह बना रही है बॉस। ऑलरेडी आईटी वर्ल्ड में विमेन का कंट्रीब्यूशन डे एंड नाइट बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। और क्यों ना करे भाई, पायलट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपना परचम लहराने के बाद अब क्रिप्टो वर्ल्ड में भी हमें बराबरी करनी है, यानी कि जगह तो बनानी ही होगी। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। हाय, मेरा नाम है यशस्वी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। और इस स्पेशल सीरीज में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस के बारे में, जिनकी अचीवमेंट्स को देखकर शायद इंडिया की पोटेंशियल क्रिप्टो क्वीन भी इंस्पायर हो जाए और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस में अपना सिक्का जमा दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी। फर्स्ट पियर्स क्रिप्टो क्वीन का नाम है हेस्टर पियर्स। जैसे इंडिया का रेगुलेटर सेबी है, वैसे ही अमेरिकन रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की सेकंड टर्म कमिश्नर है मिस पियर्स। जिसे हमारे घर में चाहे कितने भी लोग कमाने वाले क्यों ना हो, पर मम्मी के अप्रूवल के बिना कभी बजट अप्रूव होता है। वैसे ही पूरे अमेरिका के स्टॉक्स और क्रिप्टो के हर छोटे बड़े प्लेयर्स को इन मम्मी के डर से रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। अरे मियाँ, तभी तो इनका निकनेम है क्रिप्टो मॉम, ऐसे ही नहीं पड़ा है। इस क्रिप्टो मॉम ने इकोनॉमिक्स में बीए किया है और ये लॉ स्कूल से पढ़ी है वकालत, और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन की ये है तुर्रम खान। इंटरेस्टिंगली, जब पूरी दुनिया अधूरे नॉलेज के साथ क्रिप्टो को लेकर के नेगेटिविटी फैला रही थी, तब मिस पियर्स ने क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बड़ा ही सेंसिबल अप्रोच अपनाया था और कहा था कि यूएस एंड दुनिया वाले एज फार एज क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न्ड, वी कैन डू मच बेटर। जैसे यूएस अपने डॉलर से वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल करता है, वैसे ही यूएस एसईसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। 2025 तक हेस्टर पियर्स यूएस एसईसी की कमिश्नर रहेंगी। तो लेट्स सी ये क्रिप्टो मॉम क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या इनकलाब लेकर के आती हैं, क्योंकि इनके नॉर्म्स का इंडियन क्रिप्टो बिल पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ेगा। लेट्स होप कि क्रिप्टो मॉम का मूड जो है वो एकदम तरोताजा रहे, ताकि हम इंडियंस को भी अच्छा खासा फायदा हो सके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन, महबूबा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाती हूँ। अरे आपको कहा था ना कि स्पेशल सीरीज है, जानना चाहते हैं इन फियर्स क्रिप्टो लेडीज के बारे में, तो वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर। तब तक के लिए दिस इज मी यशस्वी आचार्य साइनिंग आउट। Keep watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon. वापस यहीं आना अगर क्रिप्टो क्वींस के बारे में है जानना। To explain the current situation of cryptocurrency market, we have invited Andy Lane. Downturn, started off with major black swan event. That is with Terra Luna and UST. That is actually one of the biggest snowball that we have seen so far in the last 6 months. When they go down, they brought down the whole market cap.
and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. We have got you all the latest news and updates from the blockchain technology world. But first, let's take a look at the headlines. Cryptocurrencies rebound on value buying. Bitcoin climbs above $20,000. Binance, issuer of third biggest stablecoin, to stop supporting larger rival USDC. Hiring at crypto exchange Coinbase up 33% despite recent layoffs. Vitalik Buterin poll shows community wants 5-letter .eth domain name for $100. Poland suspends withdrawals from wallet service. Terror groups may use NFTs to raise funds and spread messages. UAE theatre hosts shows to share insight into Web3 and blockchain developments. Australian State Police sets up crypto unit to track transactions. Crypto exchange Bybit banned from brokering securities in Brazil. Cryptocurrencies rebounded in Asian trades Tuesday on value buying, tracking a similar move in US stock futures, though investors remain wary of the Federal Reserve's rate move. Bitcoin climbed above $20,000. Dow Jones future rose 0.7%, S&P 500 futures climbed 0.8%, and Nasdaq 100 futures advanced 0.95%. US stock markets were closed Monday for the Labor Day holiday, but other exchanges around the world were open. The 10-year Treasury yield rose 3 basis points to 3.22% in the holiday shortened week. Investors will be looking ahead to speeches from Federal Reserve presidents and a fresh rate hike decision from the European Central Bank due later this week. August PMI services and ISM services data are slated for Tuesday. Bitcoin was recently seen trading at around $20,085, up over 0.7% in the past 24 hours, as the data showed that long-term investors were adding to their stash as prices declined. Some on-chain metrics, such as dormant supply peaks, suggested that Bitcoin might be poised for a bull run. ETH, the second biggest cryptocurrency, climbed over 5.5% in the past 24 hours to trade around $1,660 ahead of the merge, the switch from a proof of work to a proof of stake consensus mechanism. This is the first of 5 enhancements planned from the blockchain and is expected to happen later this month. All other major altcoins too traded higher. Cryptocurrency market cap rebounded over $1 trillion in Asian trades. The 3 stablecoins USDC, USDP and TUSD will be exchanged by cryptocurrency exchange Binance for its own stablecoin BUSD. Users' balances in the 3 stablecoins will be automatically converted into BUSD on September 29th at 3 UTC, though users may convert their balances manually earlier if they choose. The biggest cryptocurrency exchange in the world declared on September 5th that it was taking this action to improve users' access to liquidity and capital efficiency. With the market cap of close to $52 billion, USDC, the second largest stablecoin in the world, is now no longer a tradable asset on Binance platform. The decision is also a setback for Circle Internet Financial, the company that issued USDC. Leading cryptocurrency exchange Coinbase cut 1,100 jobs, but its full-time employee count was 4,977 at the end of the second quarter of June, up 33% from the 3,730 employees it had at the end of the fourth quarter of 2021, according to a report released on September 5th. This is in stark contrast to the 18% reduction in workforce that Coinbase announced in June. Coinbase reported a staggering loss in both revenue and profit for the June quarter, recording a net loss of $1.1 billion as revenue fell sharply by nearly 60% from the same quarter last year, from $2.033 billion to $803 million. A Twitter poll conducted by Ethereum co-founder Vitalik Buterin has revealed that around half of the crypto community think the fair price for a 5-letter .eth domain name for 100 years is less than $100. According to responses from the community, the below $100 price is the best because it would ensure inclusivity for all, while others argued that the price should be high as the domain ownership would last for 100 years. The poll by Buterin was an attempt by Buterin to prevent scalpers from domain parking and provide small players the opportunity to own these domain names.
In an effort to preserve assets and stabilize liquidity, Pool & Wallet, the wallet service of one of the world's biggest Bitcoin mining pools, is suspending all withdrawals. Kevin Pan, the CEO and founder of the company, stated on Sunday that Pool & was facing liquidity issues but assured users that assets were safe. According to the Post, a feasible solution will be provided within a week, echoing Pan's statement that the company would soon come up with a plan to fix the issues. According to Pan's post, the plan might include debt. The first known case of a non-fungible token created and shared by a terrorist sympathizer has come to light, raising concerns that the immutable nature of blockchain tech could help the spread of terrorist messages and propaganda. According to intelligence experts, the NFT could be a sign that Islamic State and other terror groups may also be using blockchain technology to evade sanctions and raise funds for the terrorist campaigns. The digital token known as IS News #01 is said to be an image with the Islamic State's emblem with text praising Afghanistan-based Islamic militants for attacking a Taliban position. The analysis said this could be a sign that terrorist group may be using the emerging technology to spread their message and test new funding strategies. According to reports, the digital token was listed on NFT marketplace OpenSea, but the company quickly removed the listing and closed the poster's account, citing a zero-tolerance policy on inciting hate and violence. The Theatre of Digital Art, the UAE's first digital art theatre, is to host a series of talks on developments within Web3 and blockchain. The theatre will introduce Art Talks, a bi-monthly event to raise awareness of Web3 and promotes its widespread adoption as a result of a partnership with MENA-focused blockchain ecosystem Crypto Oasis. By highlighting influential voices from the art and crypto communities, Crypto Oasis hopes that Arte Talks will develop into a global platform that will promote innovation, entrepreneurship, and cross-border cooperation. It will include artistic perspectives from the NFT and metaverse communities and dispel some common misconceptions about Web3 and decentralized technologies. The Theatre of Digital Art is located at Souk Medinat in Jumeirah. It offers a 360-degree immersive experience to its visitors. Australian Federal Police, or AFP, has set up a new cryptocurrency unit to keep an eye on transactions involving cryptocurrencies. The move comes after the Australian Police noticed significantly increased use of cryptocurrencies in criminal activities since its first crypto seizure in early 2018. Stephen Jurga, National Manager of the AFP's Criminal Asset Confiscation Command, said the AFP on September 5th announced that it had accomplished its objective of recovering $600 million from financial crimes 2 years earlier than expected. The Criminal Assets Confiscation Task Force originally set the goal, which was anticipated to be accomplished by 2024. The Brazilian Securities and Exchange Commission banned the Singapore-based cryptocurrency exchange Bybit from brokering securities. In a declaratory act published on Monday, the CVM ordered the suspension of the public offering of any securities intermediation services directly or indirectly, including through the use of websites, applications, or social networks by Bybit to Brazilians. According to the CVM, Bybit was seeking to raise funds from investors residing in Brazil for investments in securities without the company having authorization to act as a securities intermediary. In Brazil, only Brazil's stock exchange B3 can offer securities. Bybit did not respond to a request for comment. That's all in this bulletin for now. Keep watching 3.0 TV.
गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. आपल्यासोबत कधी असं होतं का? कधी आपल्या पेरेंट्सचे मेडिकल रिपोर्ट्स मिसप्लेस होतात, कधी त्यांचे प्रिस्क्रिप्शन हरवतात, तर कधी अगदी महत्त्वाची फाईल सुद्धा हरवते. किती चांगलं होईल की जर का आपल्या फॅमिलीचे संपूर्ण मेडिकल रिपोर्ट्स कोणत्या अशा नेटवर्कवर असतील की जिथून आपण कोणतेही, कधीही आणि कुठूनही त्यांना ॲक्सेस करू शकू, की जेणेकरून आपल्या तात्काळ मेडिकल हेल्प मिळू शकेल. बरोबर ना मित्रांनो? सतत एक्सपांड होणाऱ्या या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आता हे शक्य होणार आहे. ब्लॉकचेन डॉक्युमेंटेशन सर्व्हिस ट्रान्सक्रिप्ट्स आता डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सोबत पार्टनरशिप करून मेडिकल रेकॉर्ड्स स्टोअर करणार आहेत. काय बिलीव्ह होत नाही आहे का? अहो खरंच सांगते मी. आणि ह्याची सुरुवात यांनी वॅक्सिनेशन रेकॉर्ड सोबत केली आहे. भले याची सुरुवात कोविड-19 वॅक्सिनेशन रेकॉर्ड्स पासून झाली असली तरीही डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्सचा अल्टिमेट गोल आहे की पेशंटचे सर्व मेडिकल रेकॉर्ड्स हे ब्लॉकचेनवर झाले पाहिजे, की जेणेकरून पेशंट किंवा डॉक्टर हे आपल्या फोनवर कधीही हे डॉक्युमेंट्स इझिली ॲक्सेस करू शकतील. किती इझी होईल ना लाईफ? याचा अर्थ असं नाही की हे रेकॉर्ड्स इझिली ॲक्सेसिबल झाल्यामुळे याचा सिक्युरिटीमध्ये काही हलगर्जीपणा होईल, कारण हे सर्व रेकॉर्ड्स आणि डॉक्युमेंट्स इंटरप्लॅनेटरी फाईल सिस्टीमच्या माध्यमातून स्टोअर केले जाणार आहेत. हे सिस्टीम युजर डेटाला जिओ डिसेंट्रलाइज करतात, ज्यामुळे हॅकिंग किंवा डेटा लिकिंग सारखे प्रकार होणे हे अशक्य होणार. इंटरप्लॅनेटरी फाईल सिस्टीम ही टेक्नॉलॉजी एका सिंगल डेटाला बऱ्याच पार्ट्समध्ये ब्रेक करते आणि त्यानंतर डेटाच्या त्या पार्ट्सना एन्क्रिप्टेड हॅश कोड्सच्या फॉर्ममध्ये क्लाउडवर उपलब्ध वेगवेगळ्या जिओग्राफिकल लोकेशनवर पाठवले जाते. ही खरंच चांगली गोष्ट आहे की ट्रान्सक्रिप्ट्सच्या डिसेंट्रलाइज्ड लेजरवर उपलब्ध डेटाला ऑल्टर म्हणजेच बदल केला जाऊ शकत नाही. त्यासोबतच हा डेटा शेअरिंगला अलाव करते आणि तेही त्यांना इन्स्टंटली व्हेरीफाय करून संपूर्ण सिक्युरिटी आणि प्रायव्हसी सोबत. हेल्थकेअर डिपार्टमेंटमध्ये ब्लॉकचेनच्या एंट्रीमुळे खूप सारे इतर फायदे सुद्धा होणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल, पेशंटचे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्डची सिक्युरिटी ही इम्प्रूव्ह होणार, ड्रग्सची ऑथेंटिसिटीचा इश्यू सुद्धा रिसॉल्व्ह होणार आणि ड्रग्स सप्लाय चेनला सुद्धा ट्रेस केलं जाणार. भलेही हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये ब्लॉकचेनची ॲक्सेप्टेबिलिटी सध्या थोडी स्लो आहे, परंतु येणारा 2025 पर्यंत अंदाजे 55% हेल्थकेअर ॲप्लिकेशन हे कमर्शियल पर्पजसाठी ब्लॉकचेनचा वापर करतील, की ज्यामुळे हेल्थकेअरची व्हॅल्युएशन $5.6 बिलियन पर्यंत पोहोचणार आहे. तुम्हाला माहीत आहे का की हेल्थकेअर इंडस्ट्रीमध्ये दर वर्षाला अंदाजे 30 बिलियन ट्रान्झॅक्शन होतात, ज्यामधून 50% हे फॅक्सेसच्या माध्यमातून केले जातात आणि यावर अंदाजे $250 बिलियन खर्च होत असतो. एवढा खर्च होऊनही अंदाजे 63% फिजिशियन्सना वेळेवर रेकॉर्ड्स मिळत नाहीत किंवा रेफरल लेटरमुळे अर्धवट रेकॉर्ड्स मिळत असतात. तुम्ही हे जाणून हैराण व्हाल की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हमध्ये झालेल्या मिस्टेकमुळे दरवर्षी अंदाजे 4 लाख मृत्यू होतात आणि त्यामुळे 80% केसेसच्या पाठी कारण असतं पेशंटचा मिसकम्युनिकेशन असणारा डेटा. यामध्ये जर का मेडिकल इंडस्ट्रीने सुद्धा ब्लॉकचेनला आपल्या सिस्टीमचा एक भाग बनवला तर फक्त डेटा रिलेटेड मिसकम्युनिकेशन होणार नाही, तर यामधून होणाऱ्या निष्पाप जीवांच्या बळींचा संख्येत सुद्धा घट होईल आणि यामुळे 2025 पर्यंत हेल्थकेअर इंडस्ट्री दरवर्षी अंदाजे $100 बिलियन ते $150 बिलियन ची बचतही करू शकेल, कारण डेटा ब्रीच संदर्भात असलेली कॉस्ट, IT कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, सपोर्ट फंक्शन कॉस्ट आणि पर्सनल कॉस्ट सुद्धा सेव्ह होण्यास मदत होईल. सोबतच फ्रॉड्स आणि काउंटरफिएट प्रोडक्ट्समध्ये सुद्धा घट होईल. WHOच्या अनुसार अशा फेक मेडिसिन्सचे मार्केट $75 बिलियन पेक्षा जास्त आहे,
त्यामुळे या टेक्नॉलॉजीचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे. दरम्यान काही लिमिटेशन असल्यामुळे ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी ही पूर्णपणे मेडिकल क्षेत्रात येण्यास काहीसा वेळ लागू शकतो. जसे की डेटाचे स्टँडर्डायझेशन, ब्लॉकचेन दरम्यान असणारी इंटरऑपरेबिलिटी, ब्लॉकचेन पॅटर्न्स, IP आणि प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशनची डेटा सिक्युरिटी, ऑनबोर्डिंग रेग्युलेटरी बॉडीज आणि ब्लॉकचेनचे सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स या सर्व लिमिटेशन्समुळे सध्या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला मेडिकल क्षेत्रात येण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे मित्रांनो, आता वेळ आली आहे की आपण ट्रेडिशनल डेटा सेव्हिंग मेथड्सला गुड बाय केलं पाहिजे आणि ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा वापर करायला हवा की जेणेकरून आपली फॅमिली आणि आपण नेहमीच हेल्दी राहू. कारण जो वेळेसोबत चालतो तोच भविष्यात पुढे जातो आणि हे खरंच आहे. तर मित्रांनो, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयीच्या सर्व घडामोडी जाणून घ्यायचे असतील तर पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत तुर्तास इथेच थांबते. धन्यवाद. Time is changing, we will too. ट्रेड वही होगा, ट्रेंड हम बदलेंगे. और साथ ही बदलेगा फ्लेवर भी. सिर्फ क्रिप्टो की बातें होगी विथ लॉट्स ऑफ फन. So be ready for the new experience with us. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त 3.OT में आप सभी का स्वागत करता हूं. आज हमारे साथ जुड़े हैं वो स्पेशल गेस्ट जो भारत के एक जाने माने क्रिप्टो सिक्योरिटी एक्सपर्ट में से एक है. जी हां, उनका नाम है डॉक्टर विशाल सारस्वत. इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आइए कुछ जानते हैं डॉक्टर विशाल जी के बारे में. तो डॉक्टर विशाल सारस्वत ने वर्ष 2000 में मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अपनी रिसर्च करियर की शुरुआत की और तब से वे हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में रेगुलर और विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं. डॉक्टर सारस्वत ने इंडस्ट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी मेकर सहित वेरियस एंटिटीज के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं और पढ़ाए भी है. तो आइए स्वागत करते हैं क्रिप्टो के मास्टर एंड ब्लास्टर डॉक्टर विशाल सारस्वत जी का. सर, इस एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत विशाल जी. धन्यवाद संदीप. सर, इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इसकी शुरुआत करते हैं टोर्नेडो कैश के बारे में कि टोर्नेडो कैश कब एस्टैब्लिश हुआ था, किस तरह से एक काम करता है और लोग टोर्नेडो कैश मिक्सेस का उपयोग क्यों करते हैं. टोर्नेडो कैश 2019 में स्थापित हुआ था. मेन इसका उद्देश्य है कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई आपको ट्रैक ना कर सके कि आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. यूजुअली जैसे बिटकॉइन होता है, उस पे आप जब बिटकॉइन खरीदते हैं, बिटकॉइन बेचते हैं या फिर कुछ और बिटकॉइन के माध्यम से खरीदते हैं, तो वहां पर आपका नाम नहीं आता है, पर फिर भी एक एड्रेस जो है वो कनेक्टेड रहता है उस बिटकॉइन से, जिससे लोग ट्रैक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बिटकॉइन एड्रेस वाला इंसान ये ट्रांजैक्शन कर रहा है. पूरी उसकी हिस्ट्री जो है वो आपको पता लग सकती है कि क्या क्या किया था. और कभी ना कभी तो होगा ना कि कोई ना कोई होगा जो पहचान जाएगा कि ये एड्रेस किससे एसोसिएटेड है, किस एक्चुअल इंसान से है, किसकी आइडेंटिटी से है. तो उस तरीके से पता चल जाता था कि अच्छा, विशाल ने ये खरीद फरोख्त करी है. फॉर एग्जांपल, विशाल की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि उसने आज तक क्या क्या किया है बिटकॉइन नेटवर्क पे, फॉर एग्जांपल. नहीं, तो अगर ये चीज अगर पता चलती भी है तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं.
ये मेरी प्राइवेसी है, मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आज मुझे आज छोटी सी बात मान लीजिए, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, दिखने में बहुत मैनली लगता हूँ, मैचो लगता हूँ, और अगर लोगों को लगे कि मैं कुछ सनस्क्रीन खरीद के लगा रहा हूँ तो लोगों को लगा कि अरे ये तो मैचो नहीं है। तो लोगों को क्यों पता है मैं कौन सी सनस्क्रीन लगा रहा हूँ? करेक्ट। राइट। तो दुनिया को क्या मतलब है कि मैं कौन सी पिक्चर मुझे अच्छी लगती है, कौन सी कॉमिक्स मुझे अच्छी लगती है, मैं कुछ भी खरीदूं क्यों चाहिए दुनिया को पता होना? करेक्ट। तो अभी बिटकॉइन पे सभी कोई भी चाहे वो एनालाइज कर सकता है और बहुत बिना मुश्किल के पता चल सकता है कि कौन खरीद फरोख्त कर रहा है। राइट। तो इस प्राइवेसी को एनेबल करने के लिए, इस प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए ये कॉइन मिक्सचर्स टाइप के जो सिस्टम्स हैं वो आए, और टोर्नेडो कैश भी उनमें से एक है। ओके सर, हालांकि टोर्नेडो कैश डिसेंट्रलाइज है ये हम जानते हैं, पर सेंट्रलाइज कैश मिक्सर्स और डिसेंट्रलाइज मिक्सर्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस क्या है उसमें? वेरी गुड। सो सेंट्रलाइज्ड में यूजुअली एक कोई कंपनी, कोई इंसान, एक एंटिटी होती है जो सब सारे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करती है, उनका रिकॉर्ड रखती है, उनके हाथ में होता है। तो आप जब मिक्सर पे जाते हो, आप अपने पैसे, कोई भी बिटकॉइन हो या कोई और क्रिप्टो करेंसी हो, जो आप वहां पे उस कॉइन मिक्सर को देते हो, कॉइन मिक्सर आपसे ये कॉइन्स लेंगे, फिर आपको उसके बदले में कोई दूसरे कॉइन्स देंगे, एक ऐसे तरीके से कि लोगों को पता ना चले कि आपने जो दिया और आपको जो मिले वो सेम है या नहीं है। ठीक है। तो जब सेंट्रलाइज्ड होता है तो ये जो एंटिटी जो पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रही है उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। इन आइडियल सिनारियो वो ये रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगी और फिर दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आपने पैसे दिए, जब आपको पूरे पैसे मिल गए, उन्होंने डिलीट कर दिया, दुनिया को नहीं पता चला। पर वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली अगर किसी इंसान के हाथ में आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं तो आप उसको बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो, और गवर्नमेंट वगैरह यूजुअली उन्हें डरा के, धमका के आपके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। इवन हैकर्स भी अगर उनके सिस्टम में हैक कर ले तो उनको पता चल सकता है। उस कंपनी खुद बुरी हो सकती है। ये हो चुका है कि कंपनी ने आपके पैसे चुरा के भाग गई, ऐसे भी होते हैं कॉइन मिक्सर्स ही। तो सेंट्रलाइज में ये डर रहता है। डिसेंट्रलाइज में एक सिंगल कोई इंसान या कंपनी या एंटिटी आपके ट्रांजैक्शंस को एनोनिमाइज नहीं कर रही है, इनको आपको प्राइवेसी नहीं दे रही है, बल्कि यूजर्स का ही एक नेटवर्क वो सारा मिलके, जैसे कि ब्लॉकचेन का नेटवर्क काम कर रहा है, बिटकॉइन का नेटवर्क काम कर रहा है, यहाँ पे वैसा ही एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। यूजर्स अपने पैसे डालते हैं, यूजर्स ही मिक्स करते हैं, और यहाँ तक कि जो यूजर खुद पैसे डाल रहा है उसको भी नहीं पता कि उसका पैसा किसके पास गया, कहाँ कैसे मिक्स हुआ, और उसको अपने पैसे मिल जाते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड में किसी एक एंटिटी पर, किसी एक इंसान हो चाहे कंपनी हो, कोई भी तरह की एंटिटी जो बोलते हैं, उस पर जिम्मेदारी नहीं आती कि वो मेंटेन करे, बट एज ए ग्रुप, एज ए इकोसिस्टम मेंटेन किया जाता है। ओके सर, अगला क्वेश्चन ये है कि टोर्नेडो कैश यूजर्स को कौन से क्रिप्टो वॉलेट्स को कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, और डिपॉजिट के लिए कौन कौन से टोकन्स ऑप्शंस फिलहाल अवेलेबल है? बिटकॉइन, इथेरियम एंड मेनी अदर्स, एक्चुअली बहुत सारे हैं। ये लिस्ट जो है कौन कौन से अलाउड है, ये लिस्ट अभी मुझे जवानी याद नहीं है, पर आप अपने मुंह सकते हैं। पर बिटकॉइन और इथेरियम ये दो मेन हैं, और भी कुछ हैं। ओके तो हालांकि इसके पहले भी आपने बताया था कि हालांकि टोर्नेडो कैश जो क्रिप्टो करेंसी मिक्सर का उपयोग प्राइवेसी रखने के लिए ज्यादातर किया जाता है, पर साथ ही इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा रहा है। तो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है सर, क्या कहेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली, मनी लॉन्ड्रिंग हो चाहे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो, वहां पे एक क्रिमिनल का उद्देश्य है कि मैंने कहीं से कुछ पैसे या कुछ कॉइन्स, इन दिस केस क्रिप्टो करेंसी, वो निकाली है जो मुझसे कनेक्टेड है। अब मैं चाहता हूं कि इस क्रिप्टो करेंसी को स्पेंड करना चाहता हूं विदाउट लेटिंग द ऑथोरिटीज नो, ताकि गवर्नमेंट को पता ना चले, पुलिस को पता ना चले। तो ऐसे टोर्नेडो कैश टाइप के सिस्टम्स को यूज करके मैं अपने पैसे यहाँ पे काइंड ऑफ उड़ा सकता हूँ, गायब कर सकता हूँ, फिर मुझे इसके बदले में मैंने यहाँ पे मान लीजिए इथेरियम के कुछ कॉइन्स दिए, और आगे जाके मुझे किसी और माध्यम से उतने ही पैसे मुझे मिल गए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी सिस्टम वही है कि
पैसा एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाना है और कैसे जाया जाए। तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो पहले हवाला होता था कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती वही बेचते थे हम, तो यहाँ पे भी वही ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं पैसों के, और ब्लैक का चोरी का माल जो है वो बाद में मुझे व्हाइट में काइंड ऑफ मिल जाता है और ट्रेसेबल नहीं होता है। तो वो क्या मेनली यूएस गवर्नमेंट का मानना है कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने ऐसा कुछ किया है, ऑलमोस्ट 400 मिलियन क्रिप्टो करेंसी उन्होंने ऐसे किया। क्रिप्टो करेंसी दैट इज बीइंग मनी लॉन्डर्ड इज अबाउट $7 बिलियन। तो विशाल सर, इसी को कनेक्टेड मैं एक क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ आपको कि हाल ही में जो यूएस ने टोर्नेडो कैश क्रिप्टो करेंसी मिक्सर पर जो प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद अगर कल की बात करें तो टोर्नेडो कैश डेवलपर जो है एलेक्सी पर्टसेव, उसको टोर्नेडो कैश प्रोटोकॉल में शामिल होने के संदेह में नीदरलैंड से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इस गिरफ्तारी के विरोध में एम्स्टरडैम के डैम स्क्वायर में 50 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या लगता है सर, लोग इस गिरफ्तारी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या इस विरोध की वजह से फिर से टोर्नेडो कैश क्रिप्टो करेंसी मिक्सर पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटाया जाएगा? क्या कहेंगे सर? विरोध जो हो रहा है इस अरेस्ट का, इज बेसिकली द एक फंडामेंटल जो बिलीफ है इंसान का कि प्राइवेसी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्राइवेसी हमारी फंडामेंटल राइट है। एब्सोल्युटली। तो टोर्नेडो कैश हमें प्राइवेसी प्रोवाइड कर रही है, ये मानना है। और टोर्नेडो एक्चुअली अरेस्ट का तो विरोध है ही है, बैन पे भी विरोध है, क्योंकि यहाँ पे टोर्नेडो कैश कोई सेंट्रलाइज्ड एंटिटी नहीं है, कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। हम लोग जैसे पहले बात कर रहे थे सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज्ड की, तो इसलिए ये एक तरीके से जो बैन लगता है, तो ये बैन पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम पे लगा है, किसी एक इंसान पे नहीं लगा है। कोई एक इंसान गलत कर रहा है वो नहीं कहा जा रहा है। और टोर्नेडो कैश तो एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, और जो कि प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए अब इसका टूल का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है वो कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टूल को बैन कर दो। तो ऐसे तो दुनिया में हर तरह की प्राइवेसी टेक्नोलॉजी पर ही बैन आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है, फंडामेंटल जो फाइट है कि आप टूल से एक टेक्नोलॉजी को आप बैन नहीं कर सकते। तो सर क्या लगता है इसको अगर मैं बात करूं कि ये जो विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, इसकी वजह से सरकार पर प्रेशर बन पाएगा? क्या लगता है आपको? बनेगा और मेरे ख्याल से ये बैन जो है इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और उसको अलग तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का, उन पे अटैक करो। राइट। ये वही है कि दुनिया में अब छुरे बनाने तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि किसी न किसी छुरे का इस्तेमाल खून करने के लिए किया जाता है। राइट। तो छुरा बनाना ही बंद कर दिया दुनिया में, तो लोग बाद में जहाँ पे छुरे की जो बाकी लेजिटिमेट यूज है वो कैसे करेंगे? खाना कैसे, सब्जी कैसे काटूंगा मैं? एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे वो अटैक है कि आप छुरे सब्जी काटने पे आप बैन नहीं लगा सकते, आपको छुरे का गलत इस्तेमाल करने वालों को पकड़ना पड़ेगा। अभी तो 50 लोग जमा हो गए, और समझो और आगे जाके और मतलब ऐसे लोग जमा होकर फिर सरकार पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से फिर से उसको इनेबल करना पड़ेगा मे बी भविष्य में। यस, तो यूएस गवर्नमेंट उन्हें अपना जो है अपने लॉज को ठीक से यूज करना चाहिए, वो बदलेंगे भी, और ताकि और यस हमें साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल चाहिए ताकि हम चोरों को पकड़ सकें। करेक्ट। टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी उनको। करेक्ट। आज मैं अपनी प्राइवेसी चाहता हूं, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज मैं प्राइवेसी चाहता हूं। एब्सोल्युटली नहीं, ये तो विशाल जी, ये तो प्रतिबंध समझो जो लगाया गया है ये यूएस के अंदर लगाया गया है, पर लेज़रस ग्रुप जो है जो नॉर्थ कोरिया में बसा हुआ है वो इसका इस्तेमाल इलीगली सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका प्रतिबंध का जो इफेक्ट है वो लेज़रस ग्रुप पर पड़ेगा कि क्या इसकी वजह से लेज़रस ग्रुप के अवैध गतिविधियां जो हो रही है उस पर रोक लगाया जा सकता है? वो दूसरा कुछ क्रिएट कर लेंगे। अच्छा। थिंग इज वो और क्रिएट कर लेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर है। आज आपने इस नाम को बंद, tornado.cash को नाम बंद कर दिया, मैं कल तूफान.cash ले आऊंगा। करेक्ट। ये तो ओपन सोर्स कोड जैसे बोलते हैं, ओपन सोर्स कोड है। बिल्कुल। तो आप ऐसे आप बैन नहीं कर सकते, और लेज़रस को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनफैक्ट पॉसिबली जो लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वो ईमानदार लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस बैन से, और क्रिमिनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
पर ये जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, शायद ये टेक्नोलॉजी को हैकर के जो दिमाग के हिसाब से उनको सोचना चाहिए, तभी कुछ इसमें टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ सकती है। क्या लगता है सर आपको? देखिए, ये प्रॉब्लम ये थी कि ये टेक्नोलॉजी अच्छा काम कर रही थी। इसका गोल था प्राइवेसी प्रोवाइड करना, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिसको यूएस गवर्नमेंट तोड़ नहीं पाई, तो उन्होंने बैन लगा दिया। तो इसलिए बनाने वालों ने तो अच्छा काम किया है। अच्छे टोर्नेडो कैश बहुत सिंपल सा प्रोटोकॉल है, बहुत और इसीलिए इस पे सारी चर्चा हो रही है कि वेरी इजी प्रोटोकॉल, वेरी सिंपल प्रोटोकॉल एंड वेरी गुड प्रोटोकॉल। टेक्नोलॉजी अच्छी है। शायद मे बी अभी ये जो बैन लगाया गया है, इस दौरान शायद वो कुछ, जैसे कि आपने कहा कि ये भविष्य में इसको इनेबल फिर से करेंगे, तो इस दौरान शायद वो उसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, शायद वो मे भी काम कर सकते हैं वो दौरान। नहीं, यूजुअली इसको हम लोग जो बोलते हैं मोर देन दैट व्हाट वी कॉल बैकडोर। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये रहेगी कि इवन ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल में गवर्नमेंट समहाउ लोगों की प्राइवेसी को वायलेट कर सके। आज मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट चाहे तो पता कर सकते थे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किसका पैसा है और किसके पास गया। तो गवर्नमेंट वो टेक्नोलॉजी चाहती है कि वो समहाउ वो इनेबल कर सके। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर गवर्नमेंट ये कर सकती है तो बुरी गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। अब आज हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, मान लीजिए कि आज हमारा चीन से झगड़ा है, तो हमारे लिए चीन की गवर्नमेंट बुरी है, पर जो चीन में जो इंसान रहता है उसके लिए चीन की गवर्नमेंट अच्छी और इंडिया की गवर्नमेंट बुरी है। तो प्रॉब्लम ये है कि आज अगर मैं कर सकता हूं तो कोई और भी कर सकता है। नहीं, इसी के लिए तो वैसे जो टोर्नेडो कैश जो है उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है। SZTech ZK.money है, मोनेरो 0xTIP है, मेसियर 87 है, साइक्लोन प्रोटोकॉल है, रेनब्रिज है, फिर भी टोर्नेडो कैश क्यों फेमस है सर? जस्ट बिकॉज इट वाज वेरी सिंपल, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बहुत लोगों को फंक्शनैलिटी जो थी बहुत महंगी नहीं थी, सस्ती थी और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो लोगों को जो विश्वास है टोर्नेडो कैश पे कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, ये मेरे पैसे लेके नहीं भाग जाएगा, या फिर ये हमारी जो प्राइवेट जो ट्रांजैक्शन है वो गवर्नमेंट को नहीं दे देगा। राइट। समहाउ टोर्नेडो कैश जो है वो अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी जो इतनी पुख्ता थी उसी वजह से बदनाम भी हो गया। सो इन मींस मोनेरो वगैरह थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। मोनेरो वगैरह में एनोनिमिटी अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं है। वहां पे लिंकिंग वगैरह कुछ ना कुछ तरीके से किया जा सकता है, और ऊपर से वो जो जीरो नॉलेज प्रूफ जो यूज करते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, जो कि साधारण इंसान को समझ में नहीं आती। टाइम कंज्यूमिंग समझो, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, स्लो है और साधारण आदमी के दिमाग के बाहर की चीज है। यहाँ पे काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मुझे उससे मतलब है। तो सर विशाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को जो आपका कीमती समय देकर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। आगे भी हम आपसे इसी तरह की सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विशाल सारस्वत जी। मुझे आशा है कि आप सभी को आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अभी लाइक और शेयर करें, और हाँ आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। क्रिप्टो जगत की हर एक अपडेट के लिए 3.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही स्पेशल गेस्ट के साथ, स्पेशल शो लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। If the collapse of Luna was cryptocurrency's bear stand movement, Celsius Network threatens to become the industry's Lehman Brothers, the failure that exacerbates a market crisis.
I am Manoj Dara and you are watching this special story on Crypto TV, the Celsius and the heat wave. The New Jersey-based crypto lender froze withdrawals for its 1.7 million customers last week, citing extreme market conditions, spurring a sell-off that wiped hundreds and billions of dollars from the paper value of the cryptocurrencies globally. The Celsius blow-up followed the collapse of two major tokens last month that shook the crypto sector already under pressure as soaring inflation and rising interest rate prompted a flight from stocks and other high-risk assets. Markets went into a sell-off after US inflation data which showed the largest price increase since 1981, prompting investors to raise their bets on Federal Reserve rate hikes. That was likely the key driver of the crypto market nosedive. The rout in crypto markets, which has washed nearly 70% of the largest tokens by market value, accelerated further by the crisis at Celsius as investors panicked about liquidations and a cash crunch. So who is Celsius and how it operates, let me tell you. So Celsius, which resembles a bank while touting itself as a democratized interest income and lending platform, offers high interest rates to investors, mostly individuals, who deposits their coin with these sites. So these lenders, mostly unregulated, which often they have been referred to as, they invest in deposits with a wholesale crypto market. So Celsius has already claimed that on its website that customers who transfer their crypto on its platform can earn an annual return of up to 18.6%. And the website urges customers to earn high and borrow low. So that's what the theme is all about. So founded in 2018, Celsius has more than $8 billion lent out to clients and $12 billion in asset under management by May of this year. According to the company, that's what they have been claiming. Celsius Networks, which raised $750 million in funding late last year, is a significant player in the crypto lending space. Please remember that. Its CEO Alex Meshinsky said in a video in 2020 describing Celsius, who generates a certain amount of profit by lending assets similar to what banks do. That's an interesting theme, what Celsius has been carrying. So Celsius lends them out on a short-term basis, which are not loans. Celsius lends financial assets to players that can transact and generate income for themselves through arbitrage, market making, or shorting certain stocks or digital assets. That's what they have described. So Meshinsky framed this as more conservative strategy than DeFi, in which one lends not in a person or company, but to a pool of assets controlled by a code, albeit with ample collateral as well. So let me give you a macroeconomic perspective and insight of what this APY is all about. So according to analysts, an APY of 18.6% works well in a bullish market where the asset lent to the company increases the value of collateralization. In a bearish market, when value of these collateralized assets shrink massively, such in case of this scenario wherein the prices are down by roughly around 75% from their all-time highs, such payouts become burdensome and the company might collapse under its commitments. So that is big concern as far as Celsius is concerned, its commitments and its way forward. So pretty much similar to what occurred in the subprime mortgage markets in 2008 and 9. So mounting pressure on Celsius, what this story is all about. So every week Celsius hosts an Ask Me Anything on its YouTube channel with states aim of being transparent with the users. The company added that it has also paused its Twitter Space and Reddit very recently and Ask Me Everything sessions to focus on navigating these unprecedented challenges and seeking to fulfill their responsibility and its commitments to the community. So every week since early May, the time of Terra imposition, platform outflows have exceeded their inflows. In the first week of May, the outflows topped $1 billion, with investors pulling liquidity faster than others were willing to risk putting it in. Celsius found itself in difficult position as it has to expand revenue streams in order to continue payout to its ambitious yield to customers. Remember, that's what they have been promising, 18% and above APY is a big concern. So there were 3 red flags raised by the industry. Let me take you through. So first red flag was the CoinDesk, which quoted the Core Clipston, CEO of Swan Bitcoin, who said that the red flag came when Alex Meshinsky's claim didn't match up to what its background was. So he didn't have $3 billion in exit and it didn't have the most successful IPO way back in 2004.
Second red flag. Another warning sign came when the custodian Prime Trust dropped the firm, citing Celsius' habit of rehypothecated assets or pledging borrowers' collateral as security for its own borrowings. That was a big concern that market is actually having, and it has been a ripple effect on Celsius as well. And the third red flag, the reports of Celsius yanking $500 million from Anchor before Luna unraveled, lead Clipston to further question the risk of Celsius was taken within client's fund. These are the three big concerns which Celsius is actually facing. So the route ahead of Celsius and its investors remains uncertain going forward as well. While the company has remained relatively quiet on social media, on-chain data shows that it is actively juggling funds and loans with market makers and DeFi protocol to ensure that its liquidity on its leverage positions. So it's a very interesting update. Let me take you through. On June 13, it sold some of its stake Ethereum position before adding collateral to a loan on Maker that was near liquidation, a big concern. So stake ETH, what it is. So it's a token that meant to be worth the same as Ethereum. So each staked Ethereum token represents a unit of Ether that has been staked or deposited in what called the beacon chain. So Celsius CEO Alex Mashinsky tweeted on June 15th, the company was working non-stop but has given few details of how or when withdrawals would resume. Celsius said on early this week that it was aiming to stabilize its liquidity positions and its operation. The sector has come under regulatory scrutiny, however, particularly in the crypto markets, have been under pressure in recent months, falling alongside other so-called risk assets as interest rates have risen around the world. The record-setting rout in these cryptocurrencies has put a slew of decentralized finance applications and their communities in a race to protect themselves against a cascade of liquidation. That's all there is in today's special segment. Stay tuned on Crypto TV for more such interesting analysis and stories. Until then, this is Manoj Dara signing off. Thank you. नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन रहा $20,000 से ऊपर। तीसरे सबसे बड़े स्टेबल कॉइन जारीकर्ता बाइनेंस अपने बड़े राइवल USDC को नहीं करेगा सपोर्ट। कॉइनबेस में हाल ही में छटनी के बावजूद हायरिंग में दिखी 33% की बढ़ोतरी। विटालिक बुटरन पोल से पता चलता है कि समुदाय $100 में चाहता है 5letter.eth डोमेन का नाम। बुलिन ने वॉलेट सेवा में विड्रॉल को किया सस्पेंड। आतंकवादी समूह फंड्स जुटाने के लिए कर सकता है NFT का इस्तेमाल। UAE थिएटर ने Web3 और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में इनसाइट साझा करने के लिए होस्ट किया शो। ऑस्ट्रेलियन स्टेट पुलिस ने ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए क्रिप्टो यूनिट को किया सेट। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स के मूव को ट्रैक करते हुए मंगलवार को एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी ने वैल्यू बाइंग पर रिबाउंड किया। हालांकि इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व के रेट मूव से सावधान रहे, वहीं बिटकॉइन $20,000 से ऊपर जाते हुए देखा गया। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 0.7% चढ़ा। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.8% और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.95% की बढ़त देखने को मिली। वहीं यूएस स्टॉक्स मार्केट सोमवार को लेबर डे हॉलिडे के मौके पर बंद थे, लेकिन दुनिया भर के दूसरे एक्सचेंज खुले थे। ऐसे में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 3 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 3.22% हो गई है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.7% की बढ़त के साथ अराउंड $20,085 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ETH उसी समय के दौरान 5.5% की बढ़त के साथ मर्ज से पहले अराउंड $1,660 पर रहा। बात करें दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स की, तो उन्हें भी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप ने एशियन ट्रेड्स में $1 ट्रिलियन से ज्यादा पर ट्रेड किया।
3 स्टेबल कॉइन्स USDC, USDP और TUSD को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस द्वारा अपने खुद के स्टेबल कॉइन BUSD के लिए एक्सचेंज किया जाएगा। 3 स्टेबल कॉइन्स में यूजर्स की बैलेंस 29 सितंबर को 3 UTC पर ऑटोमेटिकली BUSD में कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि यूजर्स चाहे तो पहले अपने बैलेंस को मैनुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने 5 सितंबर को घोषणा की कि ये यूजर्स की लिक्विडिटी और कैपिटल एफिशिएंसी तक एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। $52 बिलियन के मार्केट कैप के साथ USDC दुनिया की दूसरे सबसे बड़े स्टेबल कॉइन अब बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडेबल एसेट नहीं है। ये निर्णय सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल USDC जारी करने वाली कंपनी के लिए भी एक सेटबैक है। 5 सितंबर को जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने 1100 नौकरियों में कटौती की, लेकिन जून के क्वार्टर 2 के अंत में इसके फुल टाइम कर्मचारियों की संख्या 4,977 थी, जो कि 2021 के क्वार्टर 4 के अंत में 3,730 कर्मचारियों से 33% ज्यादा थी। ये जून में कॉइनबेस द्वारा घोषित कर्मचारियों की संख्या में 18% की कमी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। ऐसे में कॉइनबेस ने जून क्वार्टर के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में एक चौंका देने वाला नुकसान दर्ज किया। $1.1 बिलियन का नेट लॉस दर्ज किया, क्योंकि रेवेन्यू पिछले साल के सेम क्वार्टर से नियरली 60% तक गिर गया, जो $2.033 बिलियन से $803 मिलियन हो गया था। इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरिन द्वारा किए गए एक ट्विटर पोल से पता चलता है कि लगभग आधे क्रिप्टो कम्युनिटी को लगता है कि 100 साल के लिए 5 लेटर वाले .eth डोमेन नेम की फेयर प्राइस $100 से कम है। कम्युनिटी की रिस्पॉन्सेस के अनुसार $100 से नीचे की प्राइस सबसे अच्छी है, क्योंकि ये सभी के लिए इंक्लूसिविटी इंश्योर करेगी, जबकि दूसरों ने तर्क दिया कि प्राइस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि डोमेन ओनरशिप 100 साल तक चलेगा। बुटेरिन द्वारा किया गया सर्वेक्षण बुटेरिन द्वारा डोमेन पार्किंग से स्कैल्पर्स को रोकने और छोटे प्लेयर्स को इन डोमेन नेम्स के मालिक होने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास था। एसेट्स को प्रिजर्व करने और लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने की कोशिशों में दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन माइनिंग पूल्स में से एक की वॉलेट सर्विस पूल एंड वॉलेट सभी विड्रॉल्स को सस्पेंड कर रही है। कंपनी के CEO और फाउंडर केविन पैन ने रविवार को कहा कि पूल एंड लिक्विडिटी के मुद्दों का सामना कर रहा था, लेकिन यूजर्स को अश्योर किया गया कि एसेट्स सुरक्षित हैं। पोस्ट के अनुसार एक हफ्ते के भीतर एक फीजिबल सॉल्यूशन प्रदान किया जाएगा, जो पैन के बयान की प्रतिध्वनि है कि कंपनी जल्द ही मुद्दों को ठीक करने की योजना के साथ आएगी। पैन के पोस्ट के मुताबिक इस प्लान में डेट भी शामिल हो सकता है। टेररिस्ट सिंपथाइजर द्वारा बनाए और शेयर किए गए नॉन फंजिबल टोकन का पहला मामला सामने आया है। उससे चिंता बढ़ रही है कि ब्लॉकचेन तकनीक का इम्यूटेबल नेचर टेररिस्ट मैसेजेस और प्रोपेगेंडा के प्रसार में मदद कर सकता है। इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के अनुसार NFT इस बात का संकेत हो सकता है कि इस्लामिक स्टेट और दूसरे टेरर ग्रुप्स भी सैंक्शन से बचने और अपने टेररिस्ट कैंपेन्स के लिए फंड्स जुटाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल टोकन, जिसे IS News #01 के रूप में जाना जाता है, को इस्लामिक स्टेट के प्रतीक के साथ एक छवि कहा जाता है, जिसमें तालिबान पोजीशन पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान बेस्ड इस्लामिक मिलिटेंट्स की प्रशंसा की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार डिजिटल टोकन को NFT मार्केटप्लेस OpenSea पर लिस्ट किया गया था, लेकिन कंपनी ने हेट और वायलेंस को बढ़ावा देने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला देते हुए लिस्टिंग से उसे तुरंत हटा दिया और पोस्टर्स अकाउंट को बंद कर दिया। UAE का पहला डिजिटल आर्ट थिएटर ऑफ डिजिटल आर्ट Web3 और ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट्स पर बातचीत की एक सीरीज को होस्ट करेगा। MENA फोकस्ड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम क्रिप्टो ओएसिस के साथ पार्टनरशिप के रिजल्ट में थिएटर Web3 के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक बाय मंथली इवेंट आर्ट टास्क पेश करेगा। आर्ट और क्रिप्टो कम्युनिटीज की इन्फ्लुएंशियल आवाजों को उजागर करके क्रिप्टो ओएसिस को उम्मीद है कि आर्ट टॉक्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप होगा, जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। इसमें NFT और मेटावर्स कम्युनिटीज के आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव शामिल होंगे और Web3 और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस को दूर किया जाएगा। डिजिटल आर्ट का थिएटर जुमायरा में सूख मेडिनाट में स्थित है। यह अपने विजिटर्स को 360 डिग्री का इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस या AFP ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने के लिए एक नई क्रिप्टो करेंसी यूनिट की स्थापना की है।
AFP के क्रिमिनल एसेट कॉन्फिस्केशन कमांड के नेशनल मैनेजर स्टीफन जर्गा ने कहा कि ये कदम ऑस्ट्रेलियन पुलिस द्वारा 2018 की शुरुआत में अपनी पहली क्रिप्टो सीजर के बाद से क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद आया है। AFP ने 5 सितंबर को घोषणा की कि उसने उम्मीद से 2 साल पहले फाइनेंशियल क्राइम से $600 मिलियन की वसूली के अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है। क्रिमिनल एसेट कॉन्फिस्केशन टास्क फोर्स ने मूल रूप से गोल सेट किया था जिसे 2024 तक पूरा करने का अनुमान था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। Cryptocurrency is a new notion, and it's difficult to grasp in a society where actual goods have long had exchangeable value. Cryptocurrency is the future of online payment, and we say this confidently because millions of cloud services and e-commerce websites already accept Bitcoin and other cryptocurrencies as a payment mode. You can buy a luxury car in Singapore and other countries and real estate properties in El Salvador, United States of America, and many other nations with cryptocurrencies. In India, the government has recently taxed profits from cryptos at 30%, which is an indicator that crypto transactions have a future in the Indian markets. However, these businesses need to integrate a crypto payment gateway to accept bitcoins or other cryptocurrencies on their websites or app. There are many crypto payment providers, but most of them do not fit the Indian market. This video will provide you with all the information related to crypto payments along with some of the best crypto gateway services in India. I am Manoj Dara and you are watching this special segment on what is cryptocurrency payment gateway. A cryptocurrency payment gateway, like payment processors, gateway, and acquiring bank credit cards, is a payment processor for digital currencies. It allows you to accept cryptocurrency as a mode of payment for your goods and services. It can be integrated on your website, mobile app, or to receive a payment via a link. Every payment you make online is processed through a payment gateway like C Avenue, Razorpay, etc. These payment gateways provide payment modes like credit card, debit cards, and net banking. On the contrary, crypto gateway receive payments from buyers' crypto wallets and deposit it in the seller's crypto wallet.
The crypto payment processor also converts and deposits fiat currency directly in the vendor's bank account after deducting of necessary charges. A suitable crypto payment processor could accept all popular cryptocurrencies like Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Tether, etc. Payment gateway. Why it is crucial? The Indian online market is catching up with global cryptocurrency market. India is the hub of world services industries with thousands of BPOs, service exporters and SaaS businesses that need receive payments from abroad. As cryptocurrency is free from exchange rates and highly secure with blockchain technology, the crypto payment gateway is one of the best ways to receive international payments. The payment gateway allows you to accept cryptocurrencies as payment and receive fiat currency in exchange. If you don't understand or trust it, let's get into the details. Flow of the payment will make you understand how this following workflow is carried out in terms of steps. First step, the customer opts to pay its cryptocurrency during a checkout, which is in store or in the web or in the app. Step 2, the crypto gateway calculates the required payment in terms of cryptocurrencies specified by the buyer. Step 3, the buyer pays the amount in crypto through his crypto wallet. Step 4, the blockchain is scanned using the integrated payment gateway where nodes confirm validates the transactions. Step 5, once the transaction is confirmed, the fee is generated. Crypto payment gateway credits the merchant's account with the desired cryptocurrency opted by him. Step 6, the crypto payment processor sends payment to merchants in designated bank account or other payment services like PayPal. Just an example, this is done at the regular intervals or as requested by the merchants. So you must be wondering what are the advantages if you opt for a payment gateway. No geo barriers. Unlike fiat money, vendors can quickly receive international transfers without regulatory compliance. No bank account. A single digital wallet is used to send and receive cryptocurrency. Vendors don't even need a bank account to receive payments. Low transaction fees. The transaction fees made for payments received made through a payment gateway cryptocurrency is very low when you compare with other modes of payment. No chargebacks. Cryptocurrency payment gateway gives sellers freedom from chargebacks as completed payments can't be reversed under any circumstances. Fifth point, allows you to receive any valid crypto payment securely. Sixth one is reduces volatility risk as most of the gateways provide fixed buying and selling rates. 7th point, it allows users to exchange the crypto for fiat money or one crypto to other easily. So you must be wondering, we have gone through all the advantages, what are the disadvantages associated with it? Because you may be receiving payments from all over the world in different time zones, you must rely on providers' capability to offer uninterrupted services. Second, the payment does go through a third party and become traceable, defeating the primary purpose of cryptocurrency. Third, the transaction fees are considered higher when payment is received through a crypto gateway. Fourth, in case your payment gateway is hacked, any funds in your provider's account will be lost while you wait for them to be transferred. Well, the crypto market has tremendous potential for inclusivity and advantages when compared to bank transfer. So we have all understood how integrating crypto payment gateway in websites and app would help businesses to receive payments from around the globe in real time without any complications. It is high time that Indian merchants adopt these payment options for expansion, growth and profitability. But will they have government support? That only time will tell. Until then, keep watching Crypto TV. This is Manoj Dara signing off. Thank you so much. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्हीच्या या खास शो मध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, क्रिप्टोकरन्सी सध्याच्या या दुनियेत गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. परंतु सध्या याचा वापर केवळ नफा कमवण्यासाठीच नाही, तर दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी केला जातोय. आज आपण क्रिप्टोशी संबंधित अशाच काही इन्स्पायरेशनल आणि इम्पॅक्टफुल गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत,
जे वास्तविक जीवनातील घटना आहेत आणि ज्यामुळे लोकांचे जीवन बदलले आहे। याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे सध्या सुरू असलेला युक्रेन आणि रशिया मधलं युद्ध। या युद्धामध्ये एक 20 वर्षांचा युक्रेनियन रेफ्युजी ज्याला रशियन आक्रमण सुरू असताना आपला देश सोडावा लागला, त्यावेळी त्याच्याकडे फक्त $2000 बिटकॉइन्स होते आणि त्याला या युद्धामुळे त्याच्या पेनड्राईव्ह आणि कोल्ड वॉलेटमध्ये स्टोअर असणारी क्रिप्टोच शेवटी त्याच्यासाठी आशेचं किरण ठरली। असंच एक दुसरं उदाहरण आहे अफगाणिस्तानमध्ये राहणारी एक टेक कंपनीची CEO रोया मेहबूबचं। मागील वर्षी तालिबानने अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर रोयाला अफगाणिस्तान सोडण्यापलीकडे काहीच पर्याय नव्हता आणि तेही अशा वेळेस जेव्हा रोयाच्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अफगाणी महिलांना बाहेर काम करण्याचा अधिकार नव्हता आणि त्यांना त्यांच्या बँक अकाउंट्सला सुद्धा ऍक्सेस करण्यासाठी काही बंधनं लादली गेली होती। अशा कठीण परिस्थितीमध्ये या अफगाणी महिलांचा आधार बनला क्रिप्टो। रोया मेहबूबने आपल्या अफगाणी एम्प्लॉईजला बिटकॉइन मध्ये त्यांचा पगार देऊन त्यांची मदत केली। मित्रांनो, क्रिप्टोचे महत्त्व लोकांना तेव्हा कळलं जेव्हा रशिया आणि युक्रेनमध्ये तुफान युद्ध सुरू झालं, जेव्हा चारही बाजूला युद्धाचे वातावरण होतं। स्टॉक एक्सचेंज, बँक्स पूर्णपणे बंद होते, ATM मशीनची अक्षरशः तोडफोड झाली होती, लोकल करन्सीची व्हॅल्यू ऑलमोस्ट डाऊन झाली होती। तेव्हा युक्रेनच्या मदतीला जगभरातून लोक धावून आली आणि अखेरीस क्रिप्टोमध्ये आर्थिक मदत म्हणजेच डोनेशन्स देण्यात आले। युक्रेनचे डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचे डेप्युटी मिनिस्टर मिस्टर एलेक्स बॉन्याकॉव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार युक्रेनला आतापर्यंत $100 मिलियन क्रिप्टो डोनेशन मिळाले आहेत, ज्याचा उपयोग ते बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाईट विजन गॉगल्स, फूड सप्लाय आणि हेल्थकेअरसाठी करतायत। मित्रांनो, युक्रेनियन सरकार सध्या बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, पोल्काडॉट आणि डोज कॉइन मध्ये क्रिप्टो डोनेशन ऍक्सेप्ट करते आहे। तर दुसरीकडे काही नॉन प्रॉफिट्स आणि फिलॅन्थ्रॉपिक ऑर्गनायझेशन जसे कमबॅक अलाइव्ह, युक्रेन डॅव, एंडॉवमेंट आणि क्यू इंडिपेंडन्स सुद्धा क्रिप्टो करन्सी डोनेशन्सला डायरेक्टली ऍक्सेप्ट करतात। मित्रांनो, यात काही दुमत नाहीये की काळानुसार क्रिप्टो करन्सीमध्ये डोनेशनची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढताना पाहायला मिळते। मित्रांनो, 2020च्या तुलनेत 2021 मध्ये डिजिटल ऍसेट डोनेशन्स मध्ये 583% वृद्धी पाहायला मिळाली होती। लोक क्रिप्टो डोनेशनचा उपयोग युद्धग्रस्त देशांमध्ये आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पीडित लोकांच्या मदतीसोबत पर्यावरण संरक्षण, कोरोना पॅन्डेमिक सारख्या कठीण प्रसंगामध्ये वंचित लोकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी करते। जर पर्यावरण संरक्षणासंदर्भात म्हटलं तर पृथ्वीच्या 6% पृष्ठभागाला कव्हर करणारा ब्राझिलियन अमेझॉनच्या जंगलाला डिफॉरेस्टेशन आणि फॉरेस्ट फायर पासून वाचवण्यासाठी 1987 मध्ये स्थापित केलेला रेन फॉरेस्ट फाउंडेशनने क्रिप्टो कम्युनिटीच्या मदतीमुळे $100 मिलियन क्रिप्टो डोनेशन ॲक्वायर केले आहे, ज्याचा उपयोग वातावरणाला प्रोटेक्ट करण्यासाठी केला जाणार आहे। दुसरीकडे सेव्ह द चिल्ड्रन हे जगातील प्रथम आंतरराष्ट्रीय NGO आहे, ज्यांनी फिलिपाईन्समध्ये टायफून हायानमुळे झालेल्या विध्वंसानंतर 2013 पासून बिटकॉइनला डोनेशनच्या स्वरूपात स्वीकार करण्यास सुरुवात केली होती। यासोबत मागील वर्षी या ऑर्गनायझेशनने #HODLHOPE कॅम्पेनच्या माध्यमातून $5 मिलियन पेक्षा जास्त डोनेशन स्वीकारले आहेत, ज्याचा उपयोग युक्रेनच्या युद्धग्रस्त भागातील मुलांच्या मदतीसाठी करण्यात येतोय। भारतात जर म्हटलं तर मागील वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इथेरियमचे को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन यांनी $1.5 बिलियन ची क्रिप्टो करन्सीज बऱ्याच NGOला डोनेट केली, ज्यामध्ये कोविड-19 रिलीफ फंडच्या स्वरूपात भारताला देखील $1 बिलियन डोनेशन मिळाले। पण मित्रांनो, शेवटी जिथे माया म्हणजेच क्रिप्टो आहे तिथे माया जाल नसणं असे होऊ शकणार नाही। अलीकडे अशा बऱ्याच घटना समोर आल्या जिथे स्कॅमर्सने फेक क्रिप्टो डोनेशन वेबसाइट्स आणि ॲडव्हर्टायझिंगच्या माध्यमातून युक्रेनच्या नावावर लोकांना अक्षरशः लुटलंय। एवढंच नाही तर पॅन्डेमिक दरम्यान सुद्धा डार्क वेबवर असे बरेच फेक कोविड-19 चॅरिटीजने सुद्धा $मिलियन चा घोटाळा केला होता। म्हणून मित्रांनो, तुम्हाला कोणत्याही चॅरिटी किंवा NGOला क्रिप्टो डोनेट करायचं असेल तर त्या NGO आणि ऑर्गनायझेशन बद्दलची संपूर्ण माहितीही थोरोली चेक जरूर करून घ्या। अमेरिकेसह बऱ्याच देशांमध्ये क्रिप्टोमध्ये डोनेशन्स दिल्यावर डोनर्सला टॅक्स इन्सेंटिव्ह सुद्धा मिळतात, पण अनफॉर्च्युनेटली भारतात क्रिप्टो डोनेशन्सवर सध्या टॅक्स लावला जातोय। लेट्स होप भविष्यात भारतात फियाट करन्सी सारखंच क्रिप्टो डोनेशन्स मध्ये सुद्धा टॅक्स इन्सेंटिव्ह मिळेल, जेणेकरून जास्तीत जास्त क्रिप्टो होल्डर्स हे क्रिप्टो डोनेशनच्या मार्फत गरजूंना मदत करण्यासाठी एक पाऊल पुढे घेऊ शकतील। मित्रांनो, मला आशा आहे की आमची खास स्टोरी आपल्याला नक्कीच आवडली असणार। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर याला तुम्ही नक्कीच लाईक करा व शेअर करा आणि हो, कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका।
मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही. Today we are on a show with a very interesting topic of NFT. This NFT is for a cause. Today we have Mr. Donald Viscano. The plan moving forward is to basically mobilize a community where everybody is attending different events in the Web3 space. Miss Taylor Viscano. But we want to really focus on our marginalized communities. And Mrs. Genevieve Rupelli. We believe that we have a lot of opportunities for empowering women in Web3. यस. ओह हाय. वो क्या है ना, मैं जरा गेमिंग में बिजी हो गई थी. क्या गेम है यार. वाओ, आई एम जस्ट ब्लोन अवे. Amazing graphics, attractive in-game features and ample opportunities to earn. Yes, खेलते खेलते कमाओ. और क्या चाहिए लाइफ में. अरे मैं गेमिंग के यूनिवर्स यानी मेटावर्स की बात कर रही हूँ, जिसका बज़ आजकल हर तरफ है. और हो भी क्यों ना, जो रेवेन्यू इन दिनों मेटावर्स क्रिएट कर रहा है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. एक तो गेमिंग का क्रेज और उस पर एनएफटी की सुपर हिट कलेक्शन का रिकॉर्ड. ये एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसे हर कोई आजमाना चाहता है. नो वंडर 2021 में एनएफटी गेमिंग ने $5.17 बिलियन जनरेट किए थे, यानी 1.75 ट्रिलियन रुपीस. वाओ. इतना ही नहीं, जनवरी 2022 में एनएफटी गेमिंग ने ओवर $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया. और ये तो महज साल की शुरुआत है. आगे आने वाले तमाम क्वार्टर्स की रिपोर्ट में आंकड़े चौंकाने वाले होंगे, ये बात तो तय है. यानी अब बात अरबों से खरबों तक पहुंच जाएगी. तो अगर आप सोच रहे थे कि पेंट ब्रश उठाकर बीपल की तरह पेंटिंग बनाकर मिलियंस कमाएंगे, देन थिंक अगेन, बिकॉज़ एनएफटी गेमिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है. यहाँ कई ज्यादा कमाने के चांसेस काफी ब्राइट है. ब्लॉकचेन गेमिंग ना सिर्फ तेजी से बढ़ रही है बल्कि एनएफटी स्पेस पर राज भी कर रही है. यकीन नहीं होता? अरे मैं ऐसी कोई बात नहीं करती, पूरी रिसर्च करके आई हूँ. आई विल टॉक इन नंबर्स. 2022 के फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक एनएफटी की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $12 बिलियन से भी कहीं ज्यादा हो चुकी है. ओह माय गॉड, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है. आप जानकर हैरान होंगे कि जितनी रियल जमीन नहीं बिक रही, उससे कहीं ज्यादा गेमिंग वर्ल्ड में वर्चुअल लैंड बिक रहा है. सोचिए, हम रियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, फिर लोन लेते हैं, और लोग वर्चुअल लैंड ले रहे हैं, वो भी फुल डाउन पेमेंट पर. मेटा मेट्रिक सॉल्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वर्चुअल लैंड की सेल $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है. इतना ही नहीं, ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनीज की इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा जंप आया है. हांगकांग बेस्ड कंपनी एनिमोका ब्रांड्स ने जनवरी 2022 में करीब $5 बिलियन रेस किए हैं. दैट्स अमेजिंग, इजंट इट?
यही नहीं, क्रिप्टो किटीज डेवलपर डैपर लैब्स ने अपने NBA टॉप शॉट के प्रोजेक्ट के साथ अप्रैल 2022 में करीब $305 मिलियन की सेल की। वहीं पोकेमॉन से इंस्पायर्ड NFT बैटलिंग गेमिंग एक्सी इन्फिनिटी ने फरवरी 2022 में ओवर $4 बिलियन के साथ हाईएस्ट NFT सेल्स वॉल्यूम का रिकॉर्ड बनाया। जाहिर है ये फिगर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गेमिंग NFT इज द फ्यूचर। I mean, एंटरटेनमेंट और अर्निंग का इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगली बार अगर पेरेंट्स ब्लॉकचेन पर गेमिंग खेलने पर डांटे तो उन्हें जरा ये सक्सेस नंबर्स दिखा देना। आई एम श्योर फिर वो कहेंगे अरे अरे खेलो खेलो, मन लगाकर खेलो, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, बट बिफोर कंक्लूडिंग लेट मी मेक वन मोर थिंग क्लियर। NFT और ब्लॉकचेन गेमिंग क्रिप्टो वर्ल्ड का ही पार्ट है, जहां पर अक्सर बना रहता है डिजिटल लुटेरो यानी हैकर्स का खतरा। बात करें गेमिंग जॉइंट एक्सी इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म की, तो एट द एंड ऑफ मार्च 2022 ऑलमोस्ट क्लोज टू अप्रैल फूल डे, कुछ हैकर्स ने रॉनिन रिच की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर एक्सी इन्फिनिटी से $625 मिलियन चुरा लिए, यानी करीब 4,750 करोड़ रुपीस की चोरी। अब वो बात अलग है कि एक्सी इन्फिनिटी के डेवलपर स्काई मेविस और उनके बाइनेंस जैसे सपोर्टर्स की जेबें और उसमें रखी दौलत कुएं से भी गहरी है, इसीलिए उन्होंने गेमर्स की चोरी हुए पैसे रीइंबर्स करने का वादा किया है। So my advice is, before you start your blockchain and NFT gaming journey on any platform, make sure कि आप उस प्लेटफॉर्म का व्हाइट पेपर पढ़ें, पता लगाएं कि उसके डेवलपर्स और सपोर्टर्स कौन हैं। क्या उनके व्हाइट पेपर में इन द इवेंट ऑफ हैक आपके हार्ड अर्न्ड कैश को रीइंबर्स करने का क्लॉज है। ऑल्सो मेक श्योर आप नए सिंगल या लिमिटेड गेम्स वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहें, क्योंकि यू नेवर नो ये प्लेटफॉर्म्स लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे या नहीं। बेहतर होगा आप रोबस्ट इकोसिस्टम वाले बिग प्लेटफॉर्म से शुरुआत करें, थोड़ा धन कमाएं, फिर चाहे तो अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक यू कैन डैबल इन न्यू गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। So all the best, keep playing, keep earning and keep watching Crypto TV. Till then, this is Ruchi Sharma signing off. Have a great day. मेटावर्सच्या या जादुई दुनियेत कोणी डेटिंग करत आहे, तर कोणी गेमिंग, कोणी शो करत आहे, तर कोणी मूवी रिलीज करत आहे। पण तुमच्या विचारांच्या परे मेटावर्सच्या या रोमांचाने भरलेल्या जगात आता लोकांचे प्राणही वाचणार आहेत। अरे हो, मेटावर्सने मेडिकल क्षेत्रातील सर्वात कठीण व अविश्वसनीय गोष्टीही फारच सहज आणि शक्य केली आहे। हाय, क्रिप्टो टीव्ही मराठी मध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण दुसऱ्या क्रमांकावर प्रसिद्ध असलेली क्रिप्टो करन्सी इथिरियम बद्दल जाणून घेऊया। इथिरियम म्हणजे काय? मित्रांनो, जर तुम्हाला नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेण्यात रस असेल तर इथिरियमचे नाव तुम्ही ऐकले असालच। इथिरियम एक क्रिप्टो करन्सी आहे। गेल्या काही वर्षात त्याचे मूल्य झपाट्याने वाढले आहेत। इथिरियम हे डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क आहे, ज्याचे स्वतःचे क्रिप्टोग्राफिक चलन म्हणजेच इथर आहे, जे आपण इंटरनेटच्या मदतीने जगात कुठेही पाठवू शकतो। इथिरियम हा प्रोग्राम ब्लॉकचेनचा एक वेगळा प्रकार आहे। हे आम्हाला आमचे स्वतःचे ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोग तयार करण्यास अनुमती देते। हे ॲप्लिकेशन इथिरियम नेटवर्कवर चालवता येतात। इथिरियम आर्किटेक्चरचे दोन पैलू आहेत, क्रिप्टो करन्सी आणि इथिरियम ब्लॉकचेन। इथिरियम कोणी तयार केले? इथिरियम 2013 मध्ये विटॅलिक ब्युटरिन नावाच्या 19 वर्षीय मुलाने तयार केले होते। तो कॅनडाचा रहिवासी असून त्याचा जन्म रशियात झाला। ब्युटरिनला गणितात रस आहे,
त्याने 2012 इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक इन इन्फॉर्मॅटिक्समध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकले होते. इथिरियम लोकांना एकमेकांशी थेट कनेक्ट होण्यास अनुमती देते आणि तेही केंद्रीय अधिकाऱ्याशिवाय. हे एकत्रितपणे कॉम्प्युटरचे नेटवर्क आहे जे एका शक्तिशाली डिसेंट्रलाइज सुपर कॉम्प्युटरमध्ये एकांतरित होतात. इथिरियमची कोडिंग भाषा सॉलिडिटी ही स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट लिहिण्यासाठी वापरले जाते, जे डॅप्स चालवणारे तर्कशास्त्र आहेत. वास्तविक जीवनात सर्व करार हा इफ्स आणि देन चा संच असतो, म्हणजे अटी आणि कृतींचा संच. उदाहरणार्थ, जर मी माझ्या घरमालकाला महिन्याच्या 1 तारखेला 40,000 रुपये दिले तर मग तो मला त्याची अपार्टमेंट वापरू देतो. इथिरियमवर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स नेमके यासारखेच कार्य करतात. इथिरियम डेव्हलपर्स त्यांचा प्रोग्राम किंवा डॅप्स साठी कंडिशन लिहितात आणि मग इथिरियम नेटवर्क ते एक्झिक्यूट करते. त्यांना स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणतात कारण ते ॲग्रीमेंटचे सर्व पैलू जसे अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यप्रदर्शन आणि पेमेंट हाताळतात. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण संयोजनाद्वारे इथिरियमचा उपयोग फायनान्स, वेब ब्राउझिंग, गेमिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, आयडेंटिटी मॅनेजमेंट आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंटसाठी केला जातो. क्रिप्टोकरन्सीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वैभवी सावंत सोबत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही मराठी. नमस्कार मित्रांनो, मी संदीप कसालकर. आज मी तुम्हाला क्रिप्टोमध्ये झालेल्या मोठ्या स्कॅम बद्दल सांगणार आहे. अहो, टेन्शन घेऊ नका, मस्करी केली मी. मित्रांनो, नेहमी मी तुम्हाला क्रिप्टोमध्ये होणाऱ्या स्कॅम्स आणि क्राइम्स बद्दल सांगत असतो, पण आज आपण जरा वेगळ्या विषयावर बोलणार आहोत. ते म्हणजे नॉन फंजिबल टोकन म्हणजेच NFT. याचं दुसरं नाव न्यू फास्ट चेंजिंग ट्रेंड सुद्धा असू शकतं. क्रिप्टोच्या या दुनियेत दररोज नवीन नवीन ट्रेंड्स आणि अपडेट्स येत असतात. त्यामध्ये आज आपण बोलणार आहोत NFT लोन्स आणि NFT रेंटिंग विषयी आणि जाणून घेणार आहोत की कशा प्रकारे NFT बाईंग करणं आता फक्त सेलिब्रिटीज आणि श्रीमंत लोकांचे शौक नसून आता NFTच्या माध्यमातून तुम्ही आणि मी ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह इन्कम सोबत लोन सुद्धा घेऊ शकतो. आश्चर्य वाटत असेल ना? ही माहिती जेव्हा मी माझ्या मित्रांना सांगितली तेव्हा ती लिटरली सुपर एक्साइट झाले. या अगोदर बहुतेक लोकांना समजत नव्हतं की इमिनेमने एका एपच्या डिजिटल पेंटिंगसाठी $500,000 खर्च केलाय. तसेच एकाने तर चक्क कॉलेजच्या एका मुलाच्या सेल्फीचे कलेक्शन $1 million मध्ये विकत घेतले आहे. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की अशा NFTला स्क्रीन ग्रॅब करून फ्री मध्ये सुद्धा वापर केला जाऊ शकतो, मग याला एवढे पैसे का बरं द्यायचे? तर मग मी त्यांना सांगायचो की ॲक्च्युअल NFT विकत घेणं आणि NFTचे स्क्रीन ग्रॅब करणं यामध्ये तेवढाच फरक आहे जेवढा बिग बी अमिताभ बच्चन यांच्या बंगल्याबाहेर फोटो काढण्यामध्ये आणि ॲक्च्युअली त्यांच्या बंगल्यात जाऊन त्यांच्यासोबत फोटो काढण्यामध्ये. असो, आता NFT लेंडिंग आणि बॉरोइंग बद्दल म्हटलं तर हे डिसेंट्रलाइज फायनान्सचे एक रिव्हॉल्युशनरी कन्सेप्ट आहे. ज्याप्रमाणे आपण गोल्ड लोन घेण्यासाठी आपल्या गोल्ड ज्वेल्सला गहाण ठेवून त्यावेळी असणाऱ्या गोल्डच्या किमतीनुसार लेंडर कडून गोल्ड लोन घेत असतो, अगदी त्याचप्रमाणे आर्केड सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर आपण आपल्या NFTला गहाण ठेवून लोन घेऊ शकतो. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे प्रत्येक चमकणारी वस्तू ही सोनं नसतं, त्याप्रमाणे प्रत्येक NFTची किंमत ही एकसारखी नसते. जर तुमच्याकडे BAYC सारखी ब्ल्यू चिप NFTs असेल तर साहजिकच तुम्हाला लोन हे तात्काळ आणि मोठ्या स्वरूपात मिळेल. आणि जर का ती NFT हॉट आणि प्रसिद्ध नसेल तर काळजी करू नका, प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. मी तुम्हाला NFT लेंडिंग आणि बॉरोइंग प्लॅटफॉर्मची काही नावे सजेस्ट करतो. यांना तुम्ही एक्सप्लोर करा आणि जाणून घ्या की तुमच्या NFTच्या अगेन्स्ट या प्लॅटफॉर्मद्वारे तुम्हाला किती अमाऊंट मिळेल, त्याचं इंटरेस्ट रेट काय असेल आणि किती वेळेसाठी तुम्हाला हे लोन प्रोव्हाइड केलं जाईल. तर मित्रांनो, NFT लेंडिंग आणि बॉरोइंग प्लॅटफॉर्मचे नावं आहेत NFTFi, आर्केड, Nexio.io आणि ड्रॉप्स. हे सर्व प्लॅटफॉर्म तुमच्या NFTच्या व्हॅल्यूच्या अगेन्स्ट तुम्हाला 80% लोन देते. आणि हो, यामधील प्रत्येक प्लॅटफॉर्मचा इंटरेस्ट रेट हा वेगवेगळा आहे आणि ऑफकोर्स तेही NFTsवर डिपेंड आहे. उदाहरणार्थ, आर्केडचा इंटरेस्ट रेट
5% ते 60% एवढा आहे. तर दुसरीकडे नेक्झिओ आपल्या एनएफटीच्या अगेन्स्ट 12% ते 15% इंटरेस्ट चार्ज करतं. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे घर किंवा गोल्डच्या अगेन्स्ट घेतलेले लोन हे डिफॉल्ट झाल्यावर आपले असेट हे सीज केलं जातं, ठीक त्याचप्रमाणे जर का तुम्ही वेळेत लोनचे रिपेमेंट केलं नाही तर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट मार्फत आपल्या एनएफटीला प्लॅटफॉर्म्स मार्फत सीज करून इनकॅश केलं जातं. ही तर झाली एनएफटी लोनची गोष्ट. पण तुम्हाला माहित आहे का, आपण आपल्या एनएफटीला रेंटवर सुद्धा घेऊ शकतो आणि कोणत्या एनएफटीला शॉर्ट पिरियडसाठी रेंटवर सुद्धा देऊ शकतो. मित्रांनो, आता तुम्ही विचार करत असाल एनएफटी आणि रेंटिंग कसं शक्य आहे. चला तर आपण एक उदाहरण बघूयात. जर आपल्याला मुंबई ते दिल्ली 2 तासात पोहोचायचं असेल तर आपण 5 ते 7 हजारची फ्लाईटची तिकीट घेऊन सहज पोहोचतो. यामध्ये डायरेक्ट करोडो रुपयांचं विमान घ्यायची गरज असते का? नाही ना. अगदी त्याचप्रमाणे